हेलो चेक बाड़ाओ एकटू हेलो हेलो Not many of you are here, but I'm sure it's going to pick up. But we do have to start on time, as you all know that we are doing this in the blended format, and some of our experts, some of our most distinguished panelists are waiting for us online, and therefore we have to keep to the schedule. So once again, welcome to the second day of the fourth ICC Gems and Jewellery Summit 2022. I'm sure most of you were present in yesterday's inaugural session, which was followed by a couple of technical sessions, and they were very effective in addressing all the issues, all the challenges that are there in the way of our being future ready. But most importantly, a roadmap was planned for the future. The challenges were identified. There was very healthy debate on certain issues, and of course that is going to result in multiple options, and in general, it was a very, very positive, let's say, beginning to the fourth ICC summit. So today we are going to talk about other areas of the ecosystem, starting off primarily with one of the most important, let's say, member of this ecosystem, the Karigars. So this session, which is technically the technical session 3, because we are counting from yesterday. So here we are talking about the socio-economic working conditions of workers in Indian gold industry. And there is going to be an expert speak. Dr. P.C. Parida, Director NILAD, is waiting for us online. So may I call the members, the participants, the panelists who would be there in this particular session to kindly come up to the dais. Mr. Shubhankar Sen, Co-Chairman, ICC National Expert Committee on Jewellery and Lifestyle, would be moderating this session. So Mr. Shubhankar Sen, we request you to come up. Mr. P.R. Somasundaram is here today too, and he's of course the Regional CEO, India World Gold Council, and Mr. Togo Chandra Poddar, General Secretary of the Akhil Bharatiyo Swarnokar Sangho, and Mr. Shamar Kumar De, fondly known as Babluda, Director of the GJK, the Gold Jewellery, GJC, the Gold Jewellery Council, Eastern Region. So we are waiting for Mr. Poddar. There he is. So 4 physical panelists and 1 virtual panelist, the expert, who is waiting online. It is over to Mr. Shubhankar Sen. Yes, good morning everyone. Shakulke, good morning. Welcome to the second day of the 4th ICC Gem and Jewellery Summit. আমরা এই সামিটটা যে করছি, এই সামিটের মূল উদ্দেশ্যটা কি? মূল উদ্দেশ্য হলো যে আমাদের জেম অ্যান্ড জুয়েলারি ইন্ডাস্ট্রিটাকে আমরা কিভাবে फ्यूचर জন্য এগিয়ে নিয়ে যাব, कैसे हम लोग वो आगे लेके जाएंगे, इस बारे में हम सभी लोगों को डिस्कस करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है, और उसको सोचते हुए हम लोग अपने लेवल में, जो जैसे ज्वेलरी लेवल में हो या कारीगर लेवल में हो, वो उनका थिंकिंग, उनका एक्शंस, उनका प्लानिंग, वो उस बेसिस में, उस आधार में अगर हम लोग सब उस डायरेक्शन में सोचे, तो धीरे धीरे हम लोग देखेंगे कि हम लोग मिलके ये इंडस्ट्री को एक लेवल से दूसरा लेवल में लेके जा रहे हैं. और कलकत्ता में ये पर्टिकुलर समिट का और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, क्योंकि कलकत्ता इज़ द हब ऑफ कारीगरी.
हम लोग जानते हैं कि कारीगर्स कलकत्ता से ऑल ओवर इंडिया सप्लाइड होते हैं। हम लोग को भगवान ने ये जो एक आशीर्वाद दिया है कि इन टर्म्स ऑफ इंट्रिकेट डिजाइनिंग, गोल्ड में हो कि डायमंड में हो, कलकत्ता के कारीगर्स आर फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जब ये इंडस्ट्री ग्रो होगा तो हाउ इज इट दैट वी एज द रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री कैनॉट फॉरगेट कि हम लोग ऊपर में कंज्यूमर्स के साथ ग्रोथ होंगे तो कारीगर्स को भी कैसे हम लोग साथ में लेके चलेंगे। और आज का जो ये पैनल है और ये जो सब्जेक्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कि आज का ज्वेलरी इंडस्ट्री में व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आवर कारीगर्स, आर दे बेटर ऑफ, आर दे वेल ऑफ, वो किस हिसाब से काम कर रहे हैं और हम लोग कैसे क्या एक्शन दे सकते हैं ताकि हम लोग कारीगर को अपस्किलिंग करके, ट्रेनिंग करके वी कैन इम्प्रूव देयर लाइफ, इम्प्रूव देयर कंडीशंस ऑफ लिविंग एज वेल एज वर्किंग, एंड what should be the rules that can be followed uske liye. So thank you very much all the panelists that you all are here. We will begin this panel discussion. Pehle hum log ke sath virtually the director of NILAD, Dr. PC Parida is there with us. So we will first request Dr. Parida, are you there? Hello Dr. Parida, can you hear us? Yes, I am here. Okay Dr. Parida. Yes, yeah. So am I audible? Yes, you are audible, and we are there here in the panel, and we have a very strong member of our guests, and there are a lot of karigars amongst us also. So you can be comfortable in Hindi, English, whatever, ताकि हम लोग का जो भी thinking है, जो भी thoughts है, we want that ultimately ये down the line हम लोग सबके साथ communicate कर पाए, connect कर पाए. So I will first request you, doctor, कि आप बहुत ही डिटेल से you have done a research and you are working on the conditions of laborers across various sectors, and particularly what is your thinking and what is your findings when it comes to the conditions of work and life for our jewelry industry, the karigars of our jewelry industry. So over to you, Dr. Parida. Yeah, thank you, Chairman sir. A very good morning to all, and I sincerely thank ICC for inviting NILAD, National Institute of Labor Economics Research and Development, to be part of this important event. NILAD is an autonomous institute under Niti Aayog, is helping both Niti Aayog and other ministries in evaluation of various government schemes and programs, and also we do in the sense of organizational assessment and also capacity building and monitoring evaluation, labor issues, and human resource planning and development. So that is a very brief introduction about our organization. So as far as the current session's theme is concerned, NILAD carried out one study on socio-economic and working condition of gold workers in the Indian gold industry in way back to 2019, and this report was released by the Vice Chairman of Niti Aayog in 2020. In fact, this study was conceptualized when the representative of this Akhil Bharatiya Swarnakar Sangha, so they met the chairman of Niti Aayog in 2019. Dr. Parida, sorry to interrupt you. Will it be comfortable for you अगर आप हिंदी में थोड़ा बोल पाए तो अच्छा रहेगा? हाँ? So I think that मेरा हिंदी थोड़ा सा gender biased would be so वो थोड़ा सा problem हो जाएगा. फिर भी मैं कोशिश करूंगा हिंदी में बोलने के लिए. हम लोग का बंगालीज लोग का हिंदी भी वैसा ही होता है. Don't worry. Yes, बंगाली ओडिया में थोड़ा हमारा हिंदी का प्रॉब्लम है. तो ये एक्चुअली ये शुरू हुआ था जब 2019 में जब अखिल भारतीय स्वर्णकर संघ दे मेट द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, एंड वो लोग ने रिक्वेस्ट किया था जे आप इनके वर्कर्स के ऊपर एक स्टडी करिए सो दैट है ना विल अंडरस्टैंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन बोथ इन उनका जो जहाँ पे काम करते हैं और जहाँ पे रहते हैं, लिविंग प्लेस एंड ऑल्सो इन द वर्किंग प्लेस. So that was the basic background, and then then the vice chairman instructed NILAD to take over this study. हम लोग को शुरू किया 2019 में हमने ये स्टडी शुरू किया. बेसिकली एज ए रिसर्चर मैंने ये देखा जे हमारा बहुत सारे काम हुआ है. एक्चुअली बहुत सारे मटेरियल ये सब अवेलेबल है ऑन प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग
सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स एक्सेट्रा, इसमें बहुत सारा काम मिला है, ऑनलाइन भी डॉक्यूमेंट सारे अवेलेबल है. बट इफ यू लुक एट द है ना द वर्किंग कंडीशन, पर्टिकुलर द वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स कारीगर्स इन द गोल्ड इंडस्ट्री, इसमें बहुत कम काम हुआ है पहले. सो दिस वाज द बेसिकली सम काइंड ऑफ first initiative that the comprehensive study was done by the NILAD in 2019. So I'll come to the main findings of the study. But before that, I want to say something that ये मुद्दा क्यों जरूरी है. एक्चुअली ये वर्किंग कंडीशन क्यों इम्पोर्टेंट है. इट इज इम्पोर्टेंट बोथ है ना, एक माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल में इम्पोर्टेंट है. ये इसको समझना चाहिए हम लोग को. पर्टिकुलरली सपोज फॉर एग्जांपल, एक घर पे कोई एक जो है ना हेड ऑफ द हाउस होल्ड और द मेन अर्नर्स जो इनकम करता है, अगर वो ही और शी विल फॉल सिक और ना lose the job, so in that case the entire family suffers because of loss of income and wealth. So that is the impact of at the micro level. So look at the how actually if you don't look at the working condition of workers, don't take care of them, then how it is actually impacting at the micro level. Macro level में ऐसे ही भी होता है, जब है ना जब we don't provide sufficient है ना to take care their health and keep them happy and provide them equal opportunities and skill training. So ये क्या होता है, the entire industry suffers because of है ना we ultimately end up lower productivity and also the efficiency. जब आप कुछ उनको खुश नहीं करोगे, अच्छा पैसा नहीं दोगे और आप उनको सही ट्रेनिंग नहीं दोगे, तो क्या होगा, तो ये जो वर्कर्स है उनका जो एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी कम होता है. सो दैट वे द एंटायर इंडस्ट्री सफर्स. एंड ऑल्सो एट द मैक्रो लेवल what we observe the last several years, the productivity of labor and capital, in the sense productivity, I understand, I hope that the audience present here, they understand what is productivity, that a particular labor जो produce करता है ना, जो per hour जो कितना यूनिट प्रोड्यूस करता है, वो प्रोडक्टिविटी होता है लेबर का, द वर्कर का, तो वो कम होता जा रहा है because we have a lot of unskilled labor, they are working in the unorganized sector particularly. If you look at the composition of employment both in organized and unorganized sector, registered or unregistered, more than 90% workers are working in unorganized sector, and most of them are unskilled as compared to our developed countries. South Korea आप ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, और दूसरा कंट्री कुछ ले लीजिए, जापान और अदर डेवलप्ड कंट्रीज, हमारा बहुत अनस्किल्ड लेबर फोर्स है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं. तो ये इम्पैक्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल में, जब जिसमें हमारा प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी कम हो रहा है. सो दो वी हैव एडवांस टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल फॉर अस, बट हमारा since we don't have knowledge, our workers don't have a right skill, they don't cannot use the advanced technology or machinery to increase their productivity or efficiency. So ये macro level में problem होता है. So of course, as you I saw your comments in the WhatsApp group that although if you provide them basic facilities and amenities, give them proper training, it may increase the total in the sense the cost of production in the short run, but we may end up getting higher return in the long run, because when we provide them basic facilities and keep them happy and give them proper training, so ultimately their productivity and efficiency will increase. So in the long run, the return will be higher than the cost in the short run. So that is the issue. Then we have choices. We have two choices: whether we want a large unorganized sector, large workers working in unorganized sector, whether they will continue as it is, or we should make them to gradually bring them to the mainstream. So that should be our objective. We have to choose whether they should continue as it is, or we have to transfer, or we have to bring them to the mainstream through registered sector. And the other point is that whether we want to see the tiny and the micro units, whether they will grow in numbers or we want to increase their size, so that they will increase their production and also bring them to the micro and medium industries. So these are the basically choices we have.
whether we want to continue with the existing system or we want to make the transformation to provide them good skills and training so that they will be more productive in the long run. So with that, so if you look at the present employment scenario, that unfortunately, though we have been successful in shifting the labor force from the primary sector to the secondary and tertiary sector, primary basically agriculture and allied sector, and then secondary is basically your manufacturing, mining and construction, etc. Then service sector is there. So if we are very successfully in transforming, shifting the labor force from agriculture to non-agriculture sector, but unfortunately we have been creating more in the sense basically this kind of unorganized or kind of this is basically informal jobs in the organized sector also. If you look at even the service sector in the various institutions and research and education institutions in the government sector also. So what they are doing, basically they are hiring more informal jobs, in the sense employing people in consolidated basis, in ad hoc basis, without giving proper health and other benefits. So that is the irony of happening in the present system, that even in the government sector we are creating more informal jobs in the formal sector. Rather the choice should have been in other way, that we should try shifting people from the informal sector to the formal sector, provide them basic facilities and all the benefits available for them as outlined in the labor codes, various labor codes. So with that, let me go to the findings of our study. So how much time I have? Dr. Parida, like 5 minutes में आप findings बता पाएंगे, मतलब अच्छा, just मैं कोशिश करूँगा yeah. Is it coming? Is it coming? No, it's not coming. Slides is not coming? Is it visible? Yes. Yeah, okay, thank you. So let me straightway go to the methodology that was used while carrying out the sample primary survey. So it was basically purposive sampling. We collected we covered around 552 gold units from 7 states. Delhi, in Delhi में हमने कोरल बाग, चांदनी चौक, लक्ष्मी नगर और उत्तम नगर, these areas हमने cover किया है. In कर्नाटक में हमने बेंगलुरु cover किया है, केरला में कोची, महाराष्ट्र में मुंबई, राजस्थान में जयपुर, तमिलनाडु में कोयम्बटूर and West Bengal में कोलकाता. So these are the places we covered in our sample size. So basically it was purposive sampling because we had a limited time, and this study was conducted before the lockdown started, because lockdown started in 2020, but this study was done in 2019. So it does not capture the impact of COVID. So I think that the impact of COVID must be much worse than what the findings shows. So I'll discuss the little bit about our findings. So this is the distribution of sample size. We covered manufacturing retail sector and both manufacturing and retail sector. So the maximum percentage was covered, 64% was manufacturing sector, manufacturing units, then followed by 26% of retail trade units, and then the both manufacturing and retail are 9%. So this is basically the distribution of sample size. So my findings will be basically in this fashion: socio-economic profile, quality of life at the living place, condition of at a workplace, then social security and medical facilities available for the workers, carriers, and then I'll give the policy suggestions if time permits. So the main findings, we found that there is a very skewed distribution of workers in both manufacturing and service sector.
In manufacturing, the ratio is 99.1. So 99% are male workers, 1% is only female workers in manufacturing sector. And the ratio is better in the manufacturing and retail sectors. It's a combination of both, and also in the retail trade sectors. So the maximum percentage of workers are in the age category of 25 to 44. So that is basically the young classification category of workers. In case of education, so there are payroll workers are working in the service sector, where we found that their qualification is diploma and graduation and above. But in basically those are contractual workers. Their qualification is basically illiterate or up to 8th class. So that is basically the qualification distribution, maximum percentage distribution of as far as the qualification is concerned. In case of shortage of skill, we asked this question to the owners of the units. So we found that 25 to 40% shortage of skilled labor, especially in the high skilled artisans, found in the sector. So in case of as far as the training of the to the workers is concerned, we found that only a handful of training institutes are available. That is only in case of urban areas, but in the rural areas, only limited institutions are available to provide the training. So there is a need of high training in the case of machine trained workers, and also there is training also required in the all areas of manufacturing and processing units. So as far as the income of workers is concerned, the average income of workers is only around 15,000 per month. So, but it is higher in case of service sector, because service and particularly in case of managers and artisans, they are getting more than 15,000 per month. Whereas in case of salesperson, goldsmith and others, they are getting basically less than 15,000 per month. So basically, as far as if you look at the Minimum Wage Act, so the wage they are getting is actually less than the minimum wage. So that is a little bit a concern for all of us. So in case of this is the findings we got from the doing the survey in the living place of the workers. We visited to their household and we collected the information as far as the drinking water is concerned, bathroom facilities, and also drainage system available in the household, and also the cooking fuel, whatever the gas cooking fuels they are using for the day-to-day activities. So basically, we found that drinking water is maximum of workers households they are using bottled water in Delhi and Karnataka. In Maharashtra, around 50% of workers households they are using piped water. Kerala, 51% are using unprotected source of water like wells, and in Rajasthan and West Bengal, mixed source of water including public tap and sand pipe. So these are basically different types of source of drinking water the households are using. Bathroom facilities, I think that Kerala is doing is very well. They are providing good facilities to the workers. 93% of workers household have access to bathroom facilities, whereas only 44% workers. But in case of West Bengal, the 44% of workers reported that they don't have access to bathroom facilities. So that is a basic concern as far as West Bengal is concerned. In case of drainage system, underground drainage system reported to be highest in Maharashtra, then it is lowest in the West Bengal, only 8.1%. As in case of cooking gas, LPG, 100% of households are using LPG in case of Delhi. In Karnataka and Tamil Nadu, 90%, and West Bengal, 43%. They are using LPG gas. As far as the working hours is concerned, we found that workers are working on an average more than 8 hours. So 9.3 hours they are working per day. So that is the average working hour per day. So due to continuous work without break. So this is the that they have this is their concern raised by the workers because of continuous work. So it is actually impacting their physically and mentally. So it is basically looking at the
So if they are working more number of hours, it is impacting their productivity and efficiency. If you look at the lack of basic facilities available at the workplace, so 42% of units do not have fire extinguishers. So that is some kind of concern for us. And around 56% of units do not have any first aid box. 23% of workers reported insufficient working space as well as no toilet facilities at the workplace. Around 27% of workers reported no washing facilities at the workplace. And if you look at the numbers that women workers have reported, around 87% of women workers, they have reported that there is no separate toilet facilities for women at the workplace. So this is some kind of, in the sense of very, very concern for this issues needs to be addressed at the earliest as possible. Now, looking at the social security and medical facilities available for the workers, around 71% of units do not provide any social security benefits in terms of EPF, GPF, group insurance and health insurance to their workers. Situation is worse for contractual workers as compared to the payroll workers. 88% units do not provide any cover under employees' state insurance schemes. So as per the current labor code, that if the worker is something like that, as per the definition that 10 workers or 20 workers. So since most of the units, manufacturing units, they have less than 10 workers. So that is why I think that they are not providing, they are not coming under employee state insurance scheme. They are not covering this scheme because of less number of workers. So basically they are in unorganized sector, not in the registered sectors. That is why 88% we found that 88% are not providing ESIS schemes. So then we found that more than 50% of workers reported lack of medical facilities at the workplace. 99% of units do not have their own dispensary, and also they depend on doctor on call arrangement for emergency. So this is basically concern. Then we have also 99% of units do not provide maternity facilities to the women workers. So these are the basically key findings of our study. So if time permits, then I'll discuss about the suggestions. Otherwise, I'll stop here. No, yes, Dr. Parida, we will take others' opinion, and then maybe at the end we can have the policy discussions once. Yes. Okay. So I would like to ask Tagore Babu, आप ये जो रिसर्च हुआ है, हम लोग का आज का जो पैनल डिस्कशन है कि हम लोग का कारीगर का कंडीशंस ऑफ वर्क और लिविंग, आप मोर देन 20 years एसोसिएशंस कर रहे हो, कारीगर के साथ बातचीत कर रहे हो. सो 10-15 साल पहले जो सिचुएशन है और आज के दिन, ये रिसर्च भी हम लोग साथ देख रहे हैं कि आज का वर्कर्स का कंडीशंस ऑल ओवर इंडिया ऐसा है. तो आपका क्या ओपिनियन है? क्योंकि बंगाल में रहते हुए हम लोग को एक चीज़ मालूम है कि एक जैसे फैक्ट्रीज में ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना एक टाइप ऑफ वर्किंग कंडीशन है, और दूसरा है कि हर एक कारीगर इज एन एंटरप्रेन्योर. एक मास्टर कारीगर होता है, उसके अंदर में कॉन्ट्रैक्ट में लोग आते हैं, उसको भी जॉब वर्क दिया जाता है. एट इस लेवल में एवरीवन इज वर्किंग लाइक अ जिग इकोनॉमी जो आप बोलते हैं, जो नो वन इज कमिटेड टू एनीवन, बट सब अपने अपना लेवल में काम करे. तो व्हाट इज योर ओपिनियन? डॉक्टर परिदा का रिसर्च के साथ आपका कितना सहमत है, और आपका एडिशनल इनपुट्स क्या है कारीगर के कंडीशन के ऊपर, और कैसे हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे? नमस्कार. आज का जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में कारीगर का एट प्रेजेंट सिचुएशन और 15 साल पिछले क्या सिचुएशन था, इसका ऊपर में विचार करने से मालूम होता है यही, जो 15 साल पहले जितना कारीगर था, अभी
मिनिमम 30% कारीगर इस लाइन छोड़ दिया। इसीलिए छोड़ा जो गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा और कारीगर लोग इंडस्ट्री पश्चिम बंगाल में खूब कमती है, जो राजस्थान में है, मुंबई में है, चेन्नई में है। तो लेकिन बंगाल में जो कारीगर लोग है वो एक मास्टर कारीगर है, उनके साथ में 50-60 कारीगर लोग एक साथ में बैठ के काम कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा विलेज और स्मॉल सिटी म्यूनिसिपैलिटी एरिया में खुद कारीगर है, वो खुद ही भी दुकानदार है, इस संख्या भी ज्यादा है। तो लेकिन मैं जो बात आपका साथ में रखने के लिए आज भावना किया है, मेरा भावना में जो इस इंडस्ट्री बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कारीगर लोग को फैसिलिटी देना पड़ेगा। और कारीगर लोग को फैसिलिटी नहीं मिलने से नया कोई कारीगर सृष्टि होता नहीं है। और हैंडमेड ज्वेलरी के ऊपर में हमारा जो निर्भरशीलता होता है वो दिन के दिन थोड़ा कमती होता है। तो बंगाल में मिनिमम कारीगर लोग 5 लाख से ज्यादा ही होता है और 23 डिस्ट्रिक्ट है। ज्यादा कारीगर बउबाजार ब्रांच में है, सिटी ब्रांच में है, और हर डिस्ट्रिक्ट सिटी में, म्यूनिसिपल एरिया में, विलेज में, स्मॉल माइक्रो स्मॉल जो कारीगर लोग है उनको एमएसएमई से कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगा, बैंक से कोई सुविधा नहीं मिलता है, गवर्नमेंट से भी कोई सुविधा नहीं मिलता है। लेकिन आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, कोविड परिस्थिति के ऊपर में प्रधानमंत्री का त्राण डिपार्टमेंट से फुटपाथ में जो हॉकर है उनको भी 10,000 रुपया करके दिया था। लेकिन सोनार लोग को लिए, कारीगर लोग के लिए हमारा जितना ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन से हम लोग को हेल्प किया, लेकिन गवर्नमेंट से और अदर्स कोई ट्रस्टी से कुछ हेल्प नहीं मिला। तो अभी मैं आपको पास विचार करने के लिए यही आवेदन रखता हूं, जो कारीगर लोग को डेवलपमेंट करने के लिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव मिस्टर सोम सुंदर जी यहां पर है। आपके पास में मेरा विनती यही है जे ऑल ओवर इंडिया में ज्यादा से ज्यादा कारीगर लोग बंगाल में है और बंगाल का लेटेस्ट डिजाइन ऑल ओवर इंडिया में चलेगा और इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट होता है। इसलिए बंगाल में जितना कारीगर है उनको थोड़ा कृपा करके फैसिलिटी देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपको। इसके बाद में मैं फिर बताएंगे। ठीक ठीक, थैंक यू टैगोर जी। समर जी, आप एक यहाँ पे जो प्रेजेंटेशन में दिखाए गए कि कारीगर का लिविंग कंडीशन और वर्किंग कंडीशन किस आधार में हम लोग जज कर रहे हैं कि उन लोग का बाथरूम फैसिलिटी, उन लोग का फायर एक्सटिंग्विशर, जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो है कि काम करते वक्त कुछ एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम ना हो, वॉशिंग फैसिलिटी,
और उसके साथ साथ स्पेस अच्छा रहना चाहिए, पीपल शुड नॉट क्रैम्प अप टुगेदर उस हिसाब से। एंड ऑल्सो कि आर दे हैप्पी। आज के दिन यंग जनरेशन कारीगर के पास मोबाइल फ़ोन तो ज़रूर है, हाँ, वो लोग भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, वो अपना फैमिली को ठीक ठाक संभाल दे पा रहे कि नहीं, प्रोडक्टिविटी है कि नहीं। तो बहुत जगह में अगर ये चीज़ नहीं है और ये चीज़ करना पड़ेगा तो उसका एक कॉस्ट है। तो वो कॉस्ट बेयर करने के लिए मास्टर कारीगर को कॉस्ट बेयर करना है, या ज्वेलर्स जो है उनके ऊपर कॉस्ट आएगा, तो कंज्यूमर के ऊपर भी कॉस्ट बढ़ेगा। तो कंज्यूमर्स क्या वो कारीगरी को वो सम्मान देने का वो सोच होना चाहिए। तो आपका क्या थॉट है कि कंडीशंस इंप्रूव करना चाहिए तो कॉस्ट बढ़ेगा, तो कॉस्ट का कौन वो कॉस्ट लेगा, आपका क्या थॉट है? गुड मॉर्निंग। अभी मिस्टर पोद्दार ने जो बात बताया हम उसके साथ मोटा मोटी सहमत है। शुभंकर जी ने एक क्वेश्चन हमको रखा है, अभी जो लिविंग कंडीशन है आर्टिजन लोग का, रियली इट्स ए वेरी पुअर, इट्स ए अनऑर्गेनाइज सेक्टर कंप्लीटली। तो नेचुरली ये जो हैंडमेड का बात हम पहले उठाता है, जो हैंडमेड ज्वेलरी है, हमारा जितना आइडिया है, हैंडमेड ज्वेलरी का मेन हाफ है वेस्ट बंगाल। मिस्टर पोद्दार ने एक जो बात बताया, अभी जो न्यू जनरेशन है, ये न्यू जनरेशन अट्रैक्शन नहीं हो रहा, और कॉस्टिंग के बारे में बोलता है। इस बारे में हम लोग थोड़ा अलग से सोच अभी लेके आर्टिजन लोग को डेवलप करने के लिए सोचा है। पहले होता है कोई भी आर्टिजन कोई भी गोल्ड का काम करता है, उसका वेस्टेज होता है। तो वेस्टेज कीमती करने के लिए जो न्यू टेक्नोलॉजी आया, न्यू टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने के लिए आर्टिजन लोग को उधर जाने का हम लोग कोशिश कर रहा। The tie-up with GJPC and SSBC मिल के एक CFC सेंटर प्रोमिनेंट जगह में हम लोग बनाया। इसका मूल उद्देश्य क्या है? लॉस जो होता है वो लॉस कितना कमती कर सकता है। डॉक्टर बाबू नोज एवरीथिंग, वो देखा है घूम घाम के। और जो बात है, जो गवर्नमेंट फैसिलिटी का जो बात चल रहा, तो हमारा एसोसिएशन में तरफ से पीएमओ में 2020 में एक चिट्ठी दिया था। कोविड सिचुएशन में आर्टिजन लोग का हालत बहुत खराब हो गया था। क्यों? कोई भी ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए 100 ग्राम से 100 ग्राम बनता नहीं, एक्स्ट्रा मेटल का जरूरत होता है। जो बांग्ला में हम लोग बोलता है ये चापान, वो जो एक्स्ट्रा गोल्ड कोविड का टाइम में आर्टिजन लोग खा लिया। उस टाइम में पूरा बंदी था, क्या करेगा? कोई सरकारी हेल्प नहीं मिला। नेचुरली अभी थोड़ा थोड़ा डेवलप्ड हो रहा, लेकिन इस बारे में हम लोग चिट्ठी लिखा था। ये आर्टिजन लोग को एज पर टर्नओवर बेसिस इन लोगों को गोल्ड प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग टर्म बेसिस में कम से कम मिनिमम 3 साल का लिए इसको लोन देने के लिए। उसका बाद रिप्लाई आया, ये आप लोग आइडेंटिटी कीजिए। हम लोग चिट्ठी दिया, जीजेपीसी, एसएसबीसी, बंगीय स्वर्ण शिल्प समिति मिलके ऑलरेडी 60,000, मोर देन 60,000 आर्टिजन को हम लोग आईडी कार्ड दे दिया। तो आईडी कार्ड का हिसाब से आप लोग दीजिए एज पर टर्नओवर।
तो इसका रिप्लाई अभी मिला नहीं। अभी हमारा एक रिक्वेस्ट है, दे आर्टिजन लोग को कुछ ना कुछ हेल्प करना चाहिए। ओवर टू यू। Thank you, thank you. Mr. Somsundaram, the World Gold Council has been thinking on the Swarna Adarsh Abhiyan, which is with the objective now that the conditions of the working conditions and the basic infrastructure of manufacturing down the line should get improved. What is, if you can elaborate a little bit on that to everyone, that what is it about, number one? Is it easy for everyone, a small enterprise, karigar, to also follow that? And do you fear that putting in such basic rules might lead to any form of shift from an unorganized to organized? If you can just talk on the same. Sure. Sir. Thank you very much. First of all, it's very heartening to note that, like hallmarking, we have now moved to talking about karigars in these panels. I don't think in recent times, at least last 4 or 5 years, I haven't heard anything about a karigar discussion, and this report is very well timed. So I must congratulate ICC for taking the lead on this, and I hope to see this discussion on karigars using this report or any other report any other association does in the next whatever events we have. So first of all, talking about the Swarna Adarsh Abhiyan, and also two things I picked out from Mr. Parida's presentation. One is obviously socio-economic working conditions, and things have to improve on the unorganized. Second, made a very important thing in the report. We are losing the real skills in this industry. Now, that is something which must worry the industry leaders, because 5 years, 7 years from now, when you turn back, you won't have the kind of skills that we have today. So I think we need to protect both, improve the working condition, at the same time make sure that we don't lose the skills. Now, what is Swarna Adarsh Abhiyan? Swarna Adarsh Abhiyan is simply a global project. What we realized is, if you see every discussion about gold, there is always lot of work done on the investment side, the bars, how banks should buy, good delivery. When it comes to the retail side, globally, you look at even a Bank of England, they will always say, if you are buying gold in the retail segment, at your own risk, don't come. Most of the schemes are, in fact, they had one website my boss used to mention, where they even said, if you do anything on the retail schemes on gold, it is most likely to be fraudulent. Okay? That is the image of the retail gold industry. Okay? So what we said is, why does it happen? Why can't the retail industry also be guided by this? So what we did was, we announced, working with various people, including GJC and all, a retail gold investment principles. Because even if you buy jewelry, it's an investment. 7 principles have been agreed globally. So any retailer who says, I'm adhering to these 7 principles, will probably, we have not started the scheme yet, will probably belong to a network. So whether you go to a RGIP compliant retailer in Switzerland, or you walk into an RGIP compliant store in Calcutta, you will have the same trust. Because trust is what is lacking in the retail industry, because there is no one person handling retail, and it's not India problem alone. And in India, we branded it as Swarna Adarsh Abhiyan. We not only took the 7 principles, because 7 principles are very motherhood, we have converted it into code of conduct for manufacturers, for jewelers, for refiners, for digital gold providers. So we have about 6 various code of conduct, which is detailed, saying that I promise to, follow good practices and all that stuff. It is self-auditable. Okay? But what we have decided is, we have just now announced this code of conduct. We have also got the marketing campaigns done. We want people to become part of Swarna Adarsh Abhiyan, and we will then take it to the consumer and say, if you see this logo, you can be very sure that you have trust. When you say trust, coming back to the panel, then you are buying from
karigars who are treated well. You are not going to say, oh, let me save my cost and go to a karigar and not care about him, but purchase what he is doing. So you will have labor practices which are on par with any this thing. So that you will yourself certify. But we are also going to form a self-regulatory organization which is independent of the industry, where the associations will have a say, but it will be independent and audit the retailers who say this. So we believe as part of Swarna Adarsh Abhiyan, we can bring these labor practices, and actually therefore, it does not matter what you see on the merchandise store. The consumer can be sure that if it is Swarna Adarsh Abhiyan store, the purchase of that jewelry has happened in a very proper way. That is, the karigar has been treated well, he's been taken care by the industry, etc. So simply put, Shivankar, if I walk into your store, you manufacture, correct? Also sell. Do you treat your manufacturing people like this? No. Your standards are different because you are a listed company. People will, complain. Auditors will say there is no fire extinguisher. You will get audited report. But when it comes to the unorganized segment, what you buy into the B2B platform, nobody questions. So now the industry has to come back and say, if I am buying in the B2B also, is it Swarna Adarsh Abhiyan compliant? But not immediately. It will probably happen in 2 years' time. That's it. Thank you. It's like an ISO. So it is like a ISO jaisa SAA. Absolutely. But done by the industry itself. Yes. When we form the SRO, we will consult all the associations and we will form an independent board which will run this program. So the audit also will be done by this program. And you don't have to be Swarna Adarsh Abhiyan. It is a voluntary thing. You don't want it, don't do it. But if you do it, and the consumer recognizes this, then you are going to get better margins, you will be ESG compliant. That's the whole purpose. Right. And also, there is a thought here that, financially supporting the karigars so that they can grow their business. Now, if we all together can appeal to the government that the duty that the government is collecting towards gold, where is that duty, those taxes that the government is collecting going towards? If using those funds, we can develop the infrastructure, and like a NABARD, the way that they are supplying and helping the agricultural income people, if there is some form of a financial product for our artisans through tracking and these SAAs and making it more vernacular, more grounded, and then they get the support financially, so they come into the organized or the official supporting system of the government. If that could be a thought. Absolutely. Again, while we are always for reduction of duty, in fact, 3 years ago, I even said, go to the government and say, don't reduce duty, but the same 2% 3% you're reducing, put it into a karigar welfare fund. So then there will not be any smuggling, because whoever is smuggling is actually taking the money out of the karigar. Okay. Now, that is for the associations to go and tell the government, keep the duty, whatever it is, but a part of the duty, slightly higher, please carve it and give it for karigar welfare. Now, are we ready for it? That's the question before us. Right. Great thoughts. Dr. Parida, before we end the panel, we go back to you. The policy suggestions that you have, if you can just quickly take us through that, then we will all get to conclude the panel accordingly. आप अगर वो पॉलिसी की आपका रिसर्च के आधार में क्या क्या आप सोचे जो करने से हम लोग का कारीगर का वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो जाएगा. ये सॉरी Is it visible? Yes, it is visible. Yeah, okay. So thank you that already 3 panelists have raised many questions. They have also addressed many issues. I hope that the industry association and also the gold worker association should do something to come out with some kind of short-term, medium-term or long-term plan
so that the workers will be benefited in the future. They should not be deprived, or they should not be kept away from the mainstream, so that all the facilities available for the registered workers, that should be available for unregistered workers as well. So that is my takeaway from this discussion. So basically, what we suggested that we should identify the unorganized units. So the industry association should do a comprehensive baseline study on both organized and unorganized sectors workers, so that they should understand what is the current scenario at the ground level. So if you have the database, base level database on all the worker units, workers and different unorganized units, then you can have some kind of plan for short term, medium term, and long term. And the way government is working for SDG, so like the Sustainable Development Goals. So that way, the industry association can work on that and see that how many goals or targets can be achieved in the short term, or medium term, or long term. Okay. So basically, the objective is basically to integrate them with the mainstream system, so that all the facilities, schemes provided by the government to the organized sector should be available to unorganized sector as well. So the second suggestion was to give at least the safety kits to workers with daily use equipment such as goggles, gas masks, gloves, lab coats, etc., to be made mandatory for all workers, for all units. This facilities should be available to workers, otherwise it is impacting their health and their work. Then we also suggested that extending employee state insurance scheme in phased manner to all workers in organized sector. In fact, the current I think that the labor code policy, they have covered the unorganized sector as well with this ESIS. So that is a good thing that the government has proposed. Then we should also, all units should adhere the minimum wage act, because what we found that most of the workers are getting less than 15,000. So that is very limited as far as their income is concerned. So with that income, they cannot manage their entire expenses of their family or children. So we have to look at, in fact, we have to also look at the inflation rate. So if you are giving 15,000 rupees and inflation rate is 5%, so the real wage will be 10,000 rupees. So you deduct that 5%. So of course, so it will be a real problem for workers to manage their family. So we have to look at that factor also. Then we have suggested that there should be gold clusters like we have IT sectors, IT and sectors in the different parts of the country. We should have a gold clusters in different parts of the country, so that at least the industry or the government can have some kind of a monitoring to see the working condition of the workers. Otherwise, it is too difficult to see, to monitor the working condition of workers in different parts of the rural or urban areas. Then we have suggested that there should be some kind of supplementing the traditional classroom training, because this is also very important. If you don't give the, you don't update the kind of training that they require to adapt to the new technology and the machines they want to use, so it will be quite difficult for them. So training is must, on-the-job training should be must for the both organized and unorganized workers. Then we have also suggested that there should be setting up new training institutions, because there are only few limited institutions that are available. They are providing the training in the urban areas. So we should expand that training institutions, not only in urban and also in the rural areas. So these are the suggestions we have given in our report. Thank you. Okay, thank you, Dr. Parida. For the interest of time, we will have to close the thing, but the discussion can go on. Out of the various suggestions जो आपने बताया है, कुछ चीज़ है जो बहुत practical है, कुछ चीज़ है जो जहाँ पे बहुत डिटेल में और डिस्कशन करना है, उसका pros and cons weigh करना है.
एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, निलर्ड और जो वेरियस एसोसिएशंस है, इवन द एसोसिएशंस दैट आर डायरेक्टली वर्किंग विद द कारीगर्स, इफ वी कैन ऑल फॉर्म अ टास्क फोर्स और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो जॉइंट कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए होगा. इट इज़ ओनली थ्रू दैट कि वो कुछ आइडिया दिए, हम लोग कुछ ग्राउंड लेवल से उनको फीडबैक दे के फिर वी कैन एड्रेस एंड अचीव what we really want to achieve. I think that is the way forward, that we should take it from here. Yes, I think that will be a good idea. ICC, particularly based now in Calcutta, you could probably take this as your main focus for the next 2-3 years. You know, we have seen how hallmarking has become a reality. We have been working on hallmarking for nearly 20 years. Okay, and particularly last 5 years, we are very, very evangelical about it. So similarly, this is so close to the heart of Calcutta. I mean, people here. So you should drive this and take leadership. From World Gold Council, we will be absolutely delighted. We will again come back on Swarna Adarsh Abhiyan. We are going to have outreach. We will also do further studies if they are required. We will be very happy to associate with the association here, ICC. Great. Thank you very much, sir. Thank you. আর শেষ করার আগে আমরা কি কোনো কারোর কিছু প্রশ্ন বা কিছু আমরা একটা প্রশ্ন নিতে পারি? ইয়েস, মিস্টার পিঞ্চা. Bengali, yeah, Bengali, and then we can translate. No, I think so understands Bengali, and he is more proficient than me, I believe. so anyway, I just wish to know from any of the panelists, excepting Som, the 3 panelists, that what are the priorities in your view? Je West Bengal working conditions sudrate gele, step 1, step 2, step 3, step 4. Because whatever this research has been published by Mr. Parida, so many factors have not been taken into that. So that is a different thing, because there are certain peculiarities in this trade where you do not have dedicated workers or loyal workers. Every worker is free to work at this bench or that bench, in this house or that house, and there is no issue at all. So this is a unique thing that is in our industry, and that is a big hindrance in providing the social security benefits to the workers. So that is another thing. But leave aside the government. What our trade should be complying for the upliftment of the karigars' lives, at least. Whatever wages they are getting, let them get. But the working condition, if you improve, so many things will improve. So in any of the panelists' view, what should be the first step to take from Calcutta, and can we resolve today that yes, after 1 year when you are sitting over here to discuss the things, you can put a report that yes, we have done this. আপনারা কেউ নিতে চান কোয়েশ্চেনটা? হোয়াট আই থিঙ্ক, আমার যেটা মনে হয় যে এই যে ডক্টর পরিদা বিভিন্ন জিনিস বলেছে, তার মধ্যে কিছু জিনিস আছে যেটা ইমিডিয়েটলি করার মতন. আমরা জুয়েলাররা আছি, ম্যানুফ্যাকচারাররা আছি, যারা জব ওয়ার্কে কারিগরদের দিয়ে আরও গয়না বানানো হচ্ছে. তো প্রথমে তাদেরকে এডুকেট করা যে তোমাদের যেখানে তোমরা গয়না তৈরি করছো ওখানে কি ফায়ার এক্সটিংগুইশার আছে, বেসিক জিনিস যেটা করতে খুব হেভি খরচা লাগে না, যেগুলো খুব সহজেই করে দেওয়া যায়. তোমাদের যেখানে তোমরা গয়না তৈরি করছো ওখানে কি তোমরা বাথরুম তৈরি করেছো? বাথরুম আছে ওয়ার্কারদের জন্যে? নিশ্চয়ই ম্যাক্সিমাম আমি বলবো 70-80% আছে, 20% হয়তো নেই. তো যারা তৈরি করাচ্ছে গয়না, বা যে ম্যানুফ্যাকচারার হোক বা রিটেলার হোক, তারা যদি এইখান থেকে নিয়ে 4-5টা জিনিস আমাদের মাস্টার কারিগরদেরকে হ্যামার করা চালু করে দেয়, এবং যারা বড় হোলসেলাররা আছে তাদেরকেও আমরা যদি 5টা চেকলিস্ট দিয়ে বলি যে তোমরা যাদেরকে দিয়ে গয়না তৈরি করছো, বাথরুম, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, এই 3-4-5টা জিনিস সেইগুলো আছে কিনা, তো ইমিডিয়েটলি সকলের মধ্যে একটা অ্যাওয়ারনেস চলে আসবে যে হ্যাঁ এগুলো তো দরকার করা, এগুলো নেই, আর এগুলো খুব সহজেই হয়ে যাবে. নেক্সট লেভেল যেখানে হচ্ছে ইন্স্যুরেন্স, যেমন জিজেপিসি অলরেডি একটা সাপোর্ট করে কারিগরদের একটা স্পেশাল ইন্স্যুরেন্স দিয়ে, কিন্তু প্রশ্নটা হলো যে অনেক কিছু হচ্ছে কিন্তু ডাউন দ্য লাইন সেগুলো কমিউনিকেট করা হচ্ছে না. দের ইজ নট আ সিঙ্গেল একটা কোনো চেকলিস্ট
বা সিঙ্গেল একটা কোনো কাগজ নেই যেটা সকলে খুব সহজেই ফলো করতে পারবে, সব আলাদা আলাদা করে আসছে। তো আমার মনে হয় যে যদি আমরা এখানে একটা চেকলিস্ট চাই, এবার এটা বলবে কে বানাবে চেকলিস্ট, আই উইল রিকোয়েস্ট দ্যাট ইফ মিস্টার সোম সুন্দরম ক্যান প্রোভাইড দ্য SSA ফর ম্যানুফ্যাকচারিং, SAA আধার में হিন্দি, ইন বেঙ্গলি, উই ক্যান ক্রিয়েট আ ভেরি ওয়ান পেজার চেকলিস্ট করে আমরা দেখি আমরা কতটা ফলো করতে পারি। উই হ্যাভ টু বিগিন সামওয়্যার, অ্যান্ড তারপরে ধীরে ধীরে ওভার দ্য নেক্সট 2 years আই এম শিওর সবার মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেসটা হয়ে যাবে। ফার্স্ট এড কিট, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, বাথরুম, এই 3-4টে জিনিস করলেই ফার্স্ট লেভেল হয়ে যাবে। তারপরে কারোর স্পেস কম আছে, ছোট আছে, দ্যাট উইল টেক আ লিটল মোর টাইম, ওটা ওভার আ পিরিয়ড অফ টাইম হয়ে যাবে। আমার মনে হয় এইভাবে করতে থাকি। প্যারালালি গভর্নমেন্ট সাপোর্ট কোথায় দরকার ইন টার্মস অফ ফিন্যান্সিং, ফান্ডিং, সোশ্যাল সিকিউরিটি। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেমন একটা আলাদা করে সোশ্যাল সিকিউরিটির জন্য যেটা করেছে, তো এইরকম যদি আমরা সেন্ট্রাল বা স্টেট লেভেলে কারিগরদের জন্য আলাদা করে করি, কারণ কি ESI এখানে কোনো এমপ্লয়ি রিলেশনশিপ নেই, এখানে একটা সেপারেট আইডেন্টিটিতে লোকেরা কাজ করছে, বাট হ্যাভিং অ্যান কারিগর আইডেন্টিটি কার্ড, ওরা যদি আলাদাভাবে কোনো রকম সোশ্যাল সিকিউরিটি পায়, বাট দ্যাট ইজ অ্যাগেন উই হ্যাভ টু ওয়ার্ক উইথ দ্য গভর্নমেন্ট ইন দ্যাট সেন্স। সো দিস ইজ মাই আনসার টু ইউ স্যার, if that can address in a certain way. There is more, I'm sure there is more thinking to be done, but this is how it is. মিস্টার সেন, আপনি যেটা বললেন ব্যাপারটা কিন্তু অত সহজলভ্য নয়, বা অত সহজভাবে কিন্তু ব্যাপারটা বুঝবে না। আমি বাংলায় বলছি এই কারণে, এখানে মেজরিটি আমার কারিগর সম্প্রদায় আছে, যারা নিজেরা কারিগর, নিজেরা দোকানদার, অত্যন্ত মাইক্রো। अच्छा, तो डॉक्टर परिदा का ऊपर में जो डिस्कशन कर रहा है, इसका बारे में बबलू बाबू भी बोला, मैं भी सेम एक ही बात बोला, जो लॉकडाउन का परिस्थिति में, कोविड परिस्थिति में हम लोग को हाथ में जो चापान था, वो चापान खत्म हो गया। और आप लोग जानते हैं जो 100 ग्राम ऑर्नामेंट्स तैयारी करने के लिए 130 ग्राम सोना का जरूरत है। तो शोरूम से मालिक जो है वो 100 ग्राम माल दिया मेटल, और जो 30 ग्राम जरूरत है अभी कारीगर का पास नहीं है। इस प्रॉब्लम में कारीगर लोग आगे बढ़ने के लिए जो कोशिश कर रहा है, वो कोशिश बंद हो गया। लेकिन फिर भी मैं श्याम सुंदर जी को रिक्वेस्ट किया है, जो आप तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल में हैं, सारा दुनिया आप घूम रहा है, सारा दुनिया का परिस्थिति आपको नॉलेज में है, लेकिन मेरा बंगाल में जो परिस्थिति चल रहा है, इसका ऊपर में आप फिर भी सर्वे कीजिए, और सर्वे के ऊपर में चर्चा करने के बाद हमारा कारीगर लोग और जो माइक्रो स्मॉल शॉपकीपर है, जो खुद कारीगर है, खुद शॉपकीपर है, उनको लिए कुछ करने के लिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं। Thank you. So what is coming out is that the financial support will be of great help in terms of the business enhancement, where it has to be structured in a correct way, along with the ESG, the social and the governance thoughts that we are thinking of. See, as I said, if we know what is to be done, this industry has always delivered. We have even, just for people who don't know, we have even formed a Assay Training Institute, which is a not-for-profit in Bombay. It is located in the GJISC building. We train assayers, and the curriculum is curated by IIT Mumbai. But again, we had COVID, but what we find is that the hallmarking centers are not sending people there. Even if it is 1 month, they are not sending people. We have even suggested, in fact, we are going to start something which says, send women trainers. Why should it always be men? We will sponsor them. The problem is, you can create an infrastructure. Industry also has to step up. I think, I will leave it on a positive note. If leaders like Shivankar Sen and Tagarji and Samarji
they all take it up. What is required for this region, because this is the center of manufacturing, I think we will all come together and find the ways of making it happen. And the report that we saw today can be a starting point. If you want to do a specific report for Calcutta, we will absolutely be happy to sponsor that report, and then we will take the recommendations from there. Thank you very much. एक रिक्वेस्ट करता हूं मैं, जो कारीगर लोग के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल ईएसआई फैसिलिटी बहुत जरूरत है। स्वास्थ्य सुरक्षा नहीं होने से कारीगर लोग आगे नहीं बढ़ने सकता हूं, इसीलिए ईएसआई फैसिलिटी मिलेगा तो वो लोग को हेल्थ सुरक्षा के लिए बहुत सुविधा होगा। Thank you everyone. Thank you so much. We will conclude by presenting mementos. May I request Mr. Shubhankar Sen to do the honors. Mr. Som Sundar. And Mr. Tagore Poddar. And Mr. Shamur Kumar De. Thank you so much. So, we are actually going to have a presentation, an NSE presentation by Mr. Hitesh Saikia, who's the Chief Manager of the National Stock Exchange. So, after this presentation, we are going to come back with the next session, which once again would have virtual participation, as also it would be moderated from on stage. Thank you so much. So we look forward to the presentation by Mr. Hitesh Saikia, Chief Manager, National Stock Exchange. जी all right, okay. Very good afternoon to all of you. I hope I'm loud, clear, audible. Yeah. So my name is Hitesh Sethia. मेरा नाम हितेश सेठिया है और मैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कमोडिटी टीम का पार्ट हूँ. नेक्स्ट 10 मिनट्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, दैट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट. बोलने की चेष्टा मैं ये कर रहा हूं. देखिए, आप कारीगर हैं, आप एक बुलियन मर्चेंट हैं, आप एक ज्वेलर हैं. एक चीज जिसका भाव आपको हमेशा इंपैक्ट करता है, एक चीज जिसके भाव को आप हमेशा देखते रहते हैं, और वो है
गोल्ड का भाव, राइट? ओके, गोल्ड का भाव। और गोल्ड के भाव में जो बढ़त हमने पिछले हफ्ते देखी और उसके बाद घटता हुआ भाव देखा, इसको हम लोग गोल्ड की प्राइस रिस्क बोलते हैं, मूल्य भाव में आने वाला चेंज। और ये सबको इंपैक्ट करता है। इंपैक्ट करने का मतलब है कि अगर भाव बढ़ रहा है तो भी कुछ लोगों को इंपैक्ट आएगा, और अगर भाव कम हो रहा है गोल्ड का तो भी कुछ लोगों को इंपैक्ट आएगा। सो एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप ये रिस्क को कम कर सकें। बेटर मैनेजमेंट ऑफ प्राइस रिस्क helps you to focus more on your business and less or negligible on the price volatility. आइए समझते हैं क्या है ये। सो आप जब बाजार जाते हैं, आप पैसा देते हैं और गोल्ड खरीद लेते हैं। इन तरीके के ट्रांजैक्शंस को हम लोग स्पॉट ट्रांजैक्शन बोलते हैं। आप बाजार गए, पैसा दिया, गोल्ड खरीद लिया, इसको स्पॉट ट्रांजैक्शन बोला गया। एक दूसरे तरीके का ट्रांजैक्शन और होता है जिसको हम डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन या वायदा ट्रांजैक्शन बोलते हैं। हिंदी में उसको वायदा। अब वायदा वर्ड आया कैसे है कि मैं किसी से वादा करता हूं, मैं आज नहीं खरीद रहा हूं, मैं गोल्ड आपसे आज नहीं खरीद रहा हूं, या मैं आपको आज गोल्ड नहीं बेच रहा हूं, मैं सिर्फ एक प्रॉमिस आपसे करता हूं, मैं सिर्फ आपसे एक वायदा करता हूं, अग्रीमेंट करता हूं, प्रॉमिस करता हूं कि मैं 5 अप्रैल के दिन, 5 अप्रैल पे मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा। आज नहीं खरीद रहा हूं, 5 अप्रैल पे खरीदूंगा, या फिर 5 मई पे खरीदूंगा। आज नहीं खरीद रहा हूं, मगर ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे आज जरूरत नहीं है, बट आज से 2 महीने बाद उस गोल्ड की जरूरत मुझे रहेगी। मैं ऐसा भी वादा आपसे कर सकता हूं जिसमें मैं आपको ये बोलूं कि मैं आज आपको गोल्ड नहीं बेच रहा हूं, मैं आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद गोल्ड आपको बेचूंगा। इन तरीके के ट्रांजैक्शंस को फाइनेंशियल वर्ल्ड में डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस बोला गया, वायदा बाजार बोला गया। मैं आज ना खरीद रहा हूं ना बेच रहा हूं, सिर्फ आपसे एक वादा कर रहा हूं कि मैं खरीदूंगा। अब सोचिए कितना अच्छा चीज है ये कितना अच्छा चीज है। मैं आज ही आपसे वादा कर ले, समझिएगा, मैं आज आपसे वादा कर लेता हूं कि मैं आपसे 51,500 में गोल्ड खरीदूंगा 2 महीने बाद में, और 2 महीने बाद कोई भी प्राइस रहे, मैं आपसे 51,500 में गोल्ड खरीद पाऊंगा। ऐसा भी हो सकता है कि गोल्ड का भाव 55,000 हो जाए, जस्ट एन एग्जाम्पल, तो भी मैं आपसे 51,500 में ही गोल्ड खरीदूंगा। तो इस तरीके के ट्रांजैक्शंस आपकी जो मूल्य भाव की रिस्क है, प्राइस की रिस्क है, उसको कम कर देते हैं। मगर इन तरीके के ट्रांजैक्शंस में एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने एक बार वादा कर लिया तो वो वादा जो है वो परमानेंट हो जाता है। परमानेंट मतलब आप रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, आपको वो कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो इसका एक एक्सटेंशन लाया गया और उसको नाम दिया गया ऑप्शन। मैं रिपीट करता हूं, ऑप्शन नाम दिया गया। क्या है वो, आइए समझते हैं। मैं आपके पास आता हूं, थोड़ा टेक्निकल है, सो आपको थोड़ा नंबर्स के साथ में मेरे साथ में रहना पड़ेगा। मैं आपके पास आता हूं और मैं आपको बोलता हूं, देखिए आज 51,500 का गोल्ड का भाव चल रहा है। आज से 2 महीने बाद में शायद अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा। पहले वाला ट्रांजैक्शन अलग था जहां पे मैं बोल रहा था कि 2 महीने बाद मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा ही, बट यहां पर मैं आपके पास आता हूं और बोलता हूं अगर मुझे ठीक लगेगा तो 51,500 में मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा शायद। सोचिए कितना अच्छा है। अगर भाव बढ़ जाएगा गोल्ड का 2 महीने बाद में तो आपसे 51,500 में खरीद लूंगा, और अगर भाव कम हो गया तो आपसे नहीं खरीदूंगा, बाजार से सस्ते में खरीद लूंगा। मैं रिपीट करता हूं, एक ऑप्शन है मेरे पास में जिसमें मैं आपको बोलता हूं कि शायद मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा 51,500 में, और ये वादा करने के लिए मैं आपको
कन्विंस करने के लिए एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट दे देता हूं, एक प्रीमियम अमाउंट कि हमारा वादा हो जाए पक्के से, एक छोटा सा प्रीमियम अमाउंट मैं आपको देता हूं और वादा करता हूं कि शायद मैं आपसे गोल्ड खरीदूंगा 51,500 के भाव में। अगर भाव 2 महीने बाद ऊपर रहा 51,500 से, तो मैं आपसे बाय कर लूंगा, और अगर 51,500 51,500 के प्राइस के नीचे रहा तो मैं आपसे बाय नहीं करूंगा, मैं बाजार से जाके खरीद लूंगा। मतलब एक फ्लेक्सिबिलिटी आ गई मेरे पास में कि अगर चाहूं तो मैं 51,500 में खरीदूंगा, अगर भाव कम हो गया तो सस्ते में खरीद लूंगा, और भाव अगर बढ़ गया तो भी मैं आपसे 51,500 में ही गोल्ड खरीदूंगा। इन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सचेंज पर ट्रेड किया जा सकता है। इन तरीके के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इनको हम लोग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, और एक्सचेंज पर आप इन तरीके के वायदे, इन तरीके के प्रॉमिसेस आप कर सकते हैं। जिस चीज का एग्जांपल मैंने आपको दिया, जिसको हम बोलते हैं कॉल ऑप्शन, टेक्निकल वर्ड है कॉल, सॉरी, कॉल ऑप्शन। एक कॉल ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट मुझे अधिकार देता है कि अगर मुझे ठीक लगेगा तो 2 महीने बाद, 1 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं गोल्ड खरीदूंगा, अगर भाव ठीक लगेगा तो, और अगर मुझे ठीक नहीं लगता तो मैं आपको मना कर दूंगा। वैसे ही हो सकता है आप बुलियन इंडस्ट्री के पार्ट हो, आप ज्वेलरी इंडस्ट्री के पार्ट हो, आप ऐसा भी वादा कर सकते हैं जिसमें आप किसी को बोलें कि अगर ठीक लगेगा तो मैं गोल्ड बेचूंगा, और ठीक नहीं लगेगा तो मैं गोल्ड नहीं बेचूंगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 52,000 का गोल्ड का भाव चल रहा है, मान लीजिए, और मैं आपके पास आके बोलता हूं कि देखिए मैं आपको 2 महीने बाद 52,000 में गोल्ड बेचूंगा, अगर भाव ठीक रहा, मुझे ठीक लगा तो मैं बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। ठीक है, ये वादा मैं आपके साथ कर लेता हूं। 2 महीने बाद गोल्ड का भाव 45,000 रुपए चल रहा है। 2 महीने बाद गोल्ड का भाव 45,000, 45,000 रुपीस चल रहा है। 45 जब चल रहा है तो मैं आपके पास आऊंगा और बोलूंगा देखिए हमने एक्सचेंज के थ्रू, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू एक वादा किया था कि अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं गोल्ड आपको 52,000 में बेच सकता हूं, और मैं बेचना चाहता हूं। सो पूरा बाजार जो है वो 48,000 में खरीद रहा है और बेच रहा है, मगर आप 52,000 में बेच पाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, मैंने वादा किया था शायद बेचूंगा 52,000 पे, और अगर भाव गिर जाता है गोल्ड का तो भी मैं 52,000 पे बेच पाऊंगा। उसी प्रकार सेम वे अगर भाव बढ़ जाता है, 55 हो जाता है, 58 हो जाता है, 60,000 हो जाता है गोल्ड का भाव, तो मैं आपको नहीं बेचूंगा। मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वादा ही यही था कि अगर ठीक लगेगा तो बेचूंगा, और ठीक नहीं लगेगा तो मैं नहीं बेचूंगा। राइट? अगर भाव बढ़ जाएगा तो आपको बोलूंगा नहीं बेचना चाहता हूं, मैं बाजार में जाऊंगा, और अगर वहां पे भाव अगर 55,000 58,000 चल रहा है, मैं वहां पे जाके उसको बेच दूंगा। तो इन 2 तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, और इनको ऑप्शंस बोला जाता है। और पर्टिकुलरली छोटे लोगों से जुड़ने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है वो 100 ग्राम गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट रखा गया है। आप एक पर्टिकुलर दिन के लिए अपना वादा कर सकते हैं। 100 ग्राम जैसा छोटा ऑप्शन आपके पास में रहता है, और ये जो ऑप्शन है इसमें आप जिस तरीके से आप चाहें उसको उस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर कॉन्ट्रैक्ट है, आपके सामने स्क्रीन पे कॉन्ट्रैक्ट है, 100 ग्राम का ये कॉन्ट्रैक्ट है। सीटीटी जो एक ट्रांजैक्शन टैक्स होता है वो लगभग ना के बराबर इस पे एप्लीकेबल होता है। सुबह 9 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक इन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, और हर महीने की 5 तारीख के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। मतलब आप बोलते हैं कि मैं 5 अप्रैल को शायद खरीदूंगा या शायद बेचूंगा। इन तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको 10 ग्राम का भाव दिखता है और 100 ग्राम का वायदा, प्रॉमिस, कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद के किया जा सकता है। ये छोटा सा लास्ट स्लाइड है फ्रॉम माय साइड, दो प्रेजेंटेशन काफी लंबा मैंने बनाया था। अगर आप देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं,
ये बहुत इफेक्टिव है, दूसरे टैक्सेस आपके 30 टाइम्स तक बच सकते हैं अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग, मैं बहुत क्लियर हूं इस चीज के लिए, मैं किसी भी तरीके का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपको नहीं बता रहा हूं, मैं आप जो करते हैं उसको आप इफेक्टिवली कर सकें उसके कुछ पॉइंटर्स बताता हूं। 30 टाइम्स ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है अगर आप इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो। ट्रांजैक्शन टैक्स लगभग 15 टाइम्स कम लगता है। इसमें आपका रिस्क जो है वो सिर्फ एक छोटे से प्रीमियम अमाउंट के बराबर है। जो छोटा सा अमाउंट दे के आप वादा करते हैं बस उतना ही रिस्क आपको है। और भी बहुत सारे हैं। बुलियन मर्चेंट्स एंड ज्वेलर्स कैन टेक एंड गिव डिलीवरी। अगर आप फिजिकल मार्केट पार्टिसिपेंट है तो आप 100 ग्राम की बार्स ले और दे सकते हैं, राइट। मैं बड़ी लास्ट एक पॉइंट जिसके साथ मैं फिनिश करना चाहूंगा। नवंबर मंथ में एनएससी ने एक प्रेस रिलीज इशू किया था जिसमें कलकत्ता के एक बहुत ही बड़े ज्वेलर ने 25 केजीज 25 किलो का लगभग डिलीवरी इस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू उठाया था, राइट। नवंबर मंथ में 25 किलो उठाया गया था। सो बोलने वाली या बताने वाली बात यह है कि एक ऐसा चीज भी है जो आपके भाव की रिस्क को कम कर सकता है। मेरा नाम हितेश सेठिया है। मेरा कोलीग प्रसन्नजीत, इफ यू कैन जस्ट स्टैंड, इज अ कोलकाता सपोर्ट फ्रॉम एनएससी साइड। आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, ये जानना हो कि इसको कैसे किया जा सकता है, लोग कैसे कर रहे हैं, समय की बाध्यता है, इसलिए आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चंस, योर queries, how to start, how to make sure that it happens, everything related to it, right, after my presentation. So that's the end of my part. Thank you so much, and I sincerely look forward for your participation on NSC option for better risk management. Thank you. I would definitely thank for this wonderful presentation, very short and succinct, which was done by Mr. Hitesh Sekia. Thank you so much. Now we move on to our next session. Already we are behind schedule, and the participants who would be joining us online are already waiting. So they are Mr. Manoj Kumar, Executive Director, International Financial Services Center Authority. He is waiting for us. Mr. P.R. Somsundaram would be on the dais with us, as also Mr. Shubhankar Sen, and Mr. Nagendra Kumar, Chief Business Officer, National Stock Exchange of India Limited, is going to participate virtually. Professor Arvind Sahai, Chairperson, India Gold Policy Center, Indian Institute of Management, Ahmedabad, is also waiting for us online. So on the dais, physically present, is Mr. Somsundaram, and we would also request Mr. Shubhankar Sen to kindly join Mr. Somsundaram on the dais. So right now, there is going to be an expert address by Mr. Manoj Kumar. May we request Mr. Manoj Kumar to start his address? Mr. Manoj Kumar, yes? And thank you very much for inviting me for this fourth ICC Gems and Jewellery Summit. In fact, though the session title is expert, but let me confess that I am not an expert. I am just initiating my journey in this process of gold trading and business. The real experts are one, the gentleman who is sitting physically present, Som, who has been the guiding force for this entire journey, and of course Professor Arvind Sahai, who has not only handled us, but he has been a real support for IFSCA to build whatever little bit we are able to build. And then my friend Nagendra, who is sitting and
You just heard one representative from NSE, Mr. Hitesh, explaining you about various facets of trading, etc. Now, Som, really, I envy you that you are the only one who is physically present in Calcutta. Hopefully, if ICC would have given us some little bit of time, I am sure Professor Sai, myself, and again, we would have also wanted to join and enjoy the hospitality at Calcutta. Now, having said this, as you know that we have been hearing for a long time that we are the largest, one of the largest consumers of gold, and time has come for us to do some soul searching to ensure that we become a price setter, not a price taker. And from that perspective, IFSCA in its very small manner started interacting with Professor Sai and his team. And of course, Som was always there as a guiding force in this entire process. And we have tried as being a very new regulator in this domestic as well as international arena. We have tried to structure ourselves in a manner that we should facilitate the best practices which are globally available, so as to ensure that we become a price taker as far as this gold is concerned. Now, in this context, let me just share some of the thought processes which IFSCA has adopted over a period of time. And probably the experts will delve into nitty-gritties because they really know how things function in the market. But let me just give you an overarching view of this entire setup which we have been trying to create here in IFSC. Pursuant to the creation of IFSCA, we have ensured that we should bring best in the class to drive this initiative. And towards that objective, we have brought 5 key players, that is NSE, BSE, NSDL, CDSL, and MCX together to come in a consortium to initiate the entire structuring of International Bullion Exchange. And I am sure the audience there in Calcutta is fully aware of these 5 players because Calcutta, since I come from a securities market background, Calcutta has always been a very active player in securities market, and their awareness about securities market is tremendous. And I think as compared to any other place like Bombay or even people who trade abroad. So probably they are all aware about the credentials of these 5 players. And this is one single most initiative which we thought that will ensure that an integrated approach towards creating an infrastructure will really help this nascent jurisdiction. And once we created this entire initiative under the IIBX umbrella through this 5 consortium partner, then we focus that what type of objectives this IIBX is going to serve. And towards this, our thrust was that the mechanism which is adopted in an exchange environment, as you know, that the biggest single differentiator for exchange and the trading which is going on today is that exchanges provide you a transparent mechanism of price discovery. So that is a core. So far, the entire trade which is happening is being done by selective players, but the exchange mechanisms give you a benefit of ensuring that the price discovery is very transparent, and settlement is guaranteed. That is another thing. So whatever little bit of risk which is prevalent in a present mode is not at all available in an exchange environment. And as I mentioned that all people who are sitting in the auditorium today, they are aware that what type of benefit exchange, clearing and settlement system brings to the entire trade. And this gives a huge confidence to players so that the chances of default, etc., are absolutely minimized. Another core aspect which we have focused during this entire process
is that we should try to become a price influencer. And people say that we should become a price taker, but having encouraged by visionaries like Som, we thought that we should try to venture out and try to do something new. And from that perspective, we thought that we should become a price influencer over a period of time. And I am sure that the way the entire trading surrounding the bullion is being structured, we will be able to ensure that through the traits of transparency, speed and efficiency, we will become one of the core players who can influence the price globally. That is the broader objective which we are having. And coupled with this objective of price influencer, we also want to become a real storage and refining hub. That is our another core objective. We feel that when we are the second largest consumer of gold, then IFSC should really drive towards becoming a global hub for storage, and linked to this is refining, because as you know that the key jurisdictions like London, etc., they are not big consumers, but they are driving their efficiencies to storage and trading activities, and we also are trying to emulate them as far as this storage driven model is concerned. Having said this, the core principle which we have as a regulator try to focus is that there should be a complete supply chain integrity in the process. It should, because as you know, the integrity of gold is something which is very, very essential, very, very important. And to ensure this, while we are not only focusing on sourcing integrity or ensuring the quality of bullion, we are also trying to drive benefits from the new technology such as blockchain, and we I think our team is actively consulting with the various new startups, and we are trying to build in from day one that the entire gold ecosystem should be benefited by the blockchain technology, so that sourcing integrity is intact. And linked with this is, of course, the quality. And another core focus for all of us is that we should see that while we have created a wonderful infrastructure, as some of you may be knowing that we wanted to start this entire trading activity, we have already done a soft launch in October 1st, and continuously mock trading, etc., is happening in our jurisdiction, and many people are participating. With an active support of Government of India, we have been able to convince government, and government is very kind to ensure that the jeweler community should also be a key participant in this entire process. And from that perspective, DGFT has also issued a notification enabling import of gold by qualified jewelers, and we have already created a process where qualified jewelers can be onboarded. And this point I am specifically emphasizing in today's context, where I have been told that artisans from Calcutta have really served the jewelry industry very well, because the inherent characteristics which they have, which is something unique, and to be very honest, I was not aware of this. I know Calcutta for different other reasons, but I was not knowing that Calcutta has people of West Bengal have this type of quality also, and they are driving many initiatives as far as jewelry creation is concerned. So considering all this, I think this facilitation of onboarding of qualified jewelers in the process of doing direct trading in IIBX will be definitely a big boost, because as a big consumer, and that too who is adding lot of value to the system, you will be directly able to source your requirement from IIBX. So if you see holistically, our objective at IFSCA
is that through this initiative of IIBX, we will be able to develop a very fair and transparent bullion trading mechanism, and linked with this, of course, the settlement mechanism where there will be absolutely zero default and well-managed risk management framework, which is at the par with the global best standards. And so I am very hopeful that this exchange will ensure a new dimension to this entire bullion trading, which is happening since many years. But whatever sophisticated means and modes have to be adopted, the IIBX would be able to initiate that process here in IFSC. With these words, I am very keen to listen to the experts who are in the panel, because as a new and startup regulator, we are very keen to learn from the wisdom and vision of all of you. So I stop here and I convey my best wishes and thank ICC for inviting me. Thank you very much. Thank you very much, sir. It was really interesting. This panel is about the bullion exchange. And to the best of my knowledge, this is the first time we are addressing anything about bullion exchange in Calcutta. So let me take 2 minutes and then I will call the experts to speak. There are two very big initiatives of the government of India, and they have done it to benefit this industry. Pele, India International Bullion Exchange, which is dollar trading of gold in Ahmedabad, gift city. No issues. So that is a new exchange which has come into being. What is the use of it? What is the purpose of it? As we just heard from the regulator himself, he's one of the senior most who has been working on this. This has been done to benefit jewelers here. As a World Gold Council, we have always said India is the second largest consumer, but it is actually leaving too much value on the table for other global agencies to take. It is not playing a global role. We are always internally focused, and we are actually giving away quite a lot to other agencies in the global arena. Now, this is one step where we are saying, look, we are the biggest consumer. Let us bring the market closer home. Which market? The dollar market, which is now happening in other parts of the world, and then you just get import. Now we are saying, let it happen in our land in dollar. So it's a very big initiative. As you go along, you please try to find out how it is going to benefit you. Very simply put, let me tell you, you are a jeweler now. If you have to buy bullion, you have to go through various things. You have to know a small bullion trader. Similarly, if you are a small bullion trader, you have to go through some other big ones. You have to go through some bank, import. If I tell you, very simply, not straightforward, but you can now import directly from IIBX. What does that mean? You are a jeweler, you can import directly from the London market. That is the kind of change that is coming. So you want to know more about it, please start understanding International Bullion Exchange. The second big initiative, which is not the purpose of this panel, which SEBI is doing it, is to bring a domestic bullion exchange also, which again you will hear more about it. These two initiatives will take some time to the benefits to fully flow, but I can assure you as a World Gold Council, it is going to position Indian bullion and therefore the jewelry industry in a very, very different, situation from now. Will it benefit the jewelers? Will it knock out small bullion traders, jewelers? No. Simply put, it is going to benefit the small players more than the bigger players. But obviously, the bigger players will show more interest initially. That is why we are doing this kind of outreach to say, small jewelers, you are the smallest of small jeweler. Understand how you can benefit from these two initiatives of the government. Government is, and the regulators are doing extraordinarily good work to bring us as a global player in bullion. Again, let me remind you, we have left too much
to global agencies, we are now taking our position in the global arena. So, as a first step, let me call Arvind Sahai, Professor Arvind Sahai. Professor Arvind Sahai is from the Indian Institute of Management, Ahmedabad. They have a institution called India Gold Policy Center. All policy discussions with the government, they help various agencies. So, Professor Arvind Sahai is there. So, Arvind, this question is actually to you. Yes, thank you, Arvind. I can see you now. This question is to you. We can't hear you. So, would you like to say a couple of words about the relevance of the bullion exchange to a jeweler? Simply put. Thank you, Som, for that excellent introduction to the Bullion Exchange. Also, thank you to the organizers of the Gems and Jewellery Summit 2020, Indian Chamber of Commerce. My apologies, I could not be there in person. I would have loved to have met Mr. Sen, Ms. Raina Guha, and all the others. In response to your question and to kind of build on the excellent points made by the regulator, Mr. Manoj Kumar, for the jewelers, essentially, it can decrease the uncertainty in the pricing and the sourcing of the gold and the quality of the gold considerably. Right now, if I am a jeweler, and especially if I am a smaller jeweler, the large guys, the titans of the world, for example, Tanishks of the world, do not have that much of an issue in sourcing of the quality of gold, the hallmark gold, the volumes, and the lot sizes that they want. But for smaller jewelers, it can be more of an issue. May I interrupt you? There's a request if you could speak in Hindi. हाँ जी, बिल्कुल. So, मेरा विचार तो ये है कि जो बड़े ज्वेलर्स हैं, उनको तो ऑलरेडी एक्सेस है. उनको सोना खरीदना है, जितना खरीदना है, जिस क्वालिटी में खरीदना है, जितना साइज में खरीदना है, वो अभी खरीद सकते हैं. जो मध्यम साइज के हैं, जो छोटे साइज के ज्वेलर्स हैं, उनके लिए खरीदना इज मच मोर ऑफ अ चैलेंज. क्वालिटी, प्राइस उनको अच्छा मिलता है या नहीं मिलता है, तो उनके लिए जो है अब एक नया मैकेनिज्म तैयार हो गया है, एक नया कॉन्डुइट तैयार हो गया है, जो कि वो डायरेक्टली खरीद सकते हैं. एंड जो एनएससी से मिस्टर सैकिया ने जो बोला था, आप अगर 3, 4, 5 लोग मिलके इफ यू यूटिलाइज दैट फैसिलिटी, फॉर एग्जांपल, अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करें, तो आपको बहुत अच्छे प्राइस मिल सकते हैं. और आपका जो गोल्ड जो आपको मिल रहा है वो गारंटीड क्वालिटी वाला है, क्योंकि वो हॉलमार्क गोल्ड होगा. क्योंकि एक्सचेंज के प्रोसेसेस जो हैं, उनका तो यही रिक्वायरमेंट है, ज़रूरत यही है कि आपको एक हॉलमार्क क्वालिटी गोल्ड ही मिलेगा. तो अवेलेबिलिटी, प्राइस एंड लॉट साइजेस, ऑल ऑफ देम, लॉट साइजेस में 100 ग्राम्स, 1 किलोग्राम एंड अबव सब जो हैं मौजूद होंगे एक्सचेंज में. So in that sense, for jewelers, it is a fantastic opportunity. बहुत ही अच्छा एक अवसर है to be able to improve quality को, गुणवत्ता को बेहतर बनाना, अच्छे प्राइस मिलने और lot size availability, तीनों चीज. Thank you, Arvind. So you all heard, easy, definite quality. Price is known. You want to buy, you want to sell, that's up to you. I mean, obviously there will be some processes because it's dollar trading, but once domestic comes in, it is much easier. So inventory management is going to be a lot better. Now I will invite Nagendra and then I'll come to you, Shivankar. Let me also tell you, these are initial days, first days. So not all of us will understand all the aspects. Some benefits will be much bigger than what we even think today, if we all collectively work towards it. One very important thing is, these two institutions, the IIBX in particular, it's actually a very, very big decision. Extremely big decision. So let me call Nagendra from the National Stock Exchange. They are one of the exchanges who have joined together to form IIBX. As the regulator said, IIBX, India International Bullion Exchange, has been formed. A CEO is also there. He is not there. He will probably come later to talk to the Calcutta and the Eastern crowd. NSE, BSE, MCX, NSDL, CDSL. All 5 have joined together to form this exchange.
So this is a global exchange. So we hope at due course others will also trade. Even people from London and others will trade. Now I'm going to ask Nagendra. Nagendra, again, can you just give a very brief thing about where this IIBX stands today, the status of the progress of its formation, implementation, and what can people look forward to in terms of 2022? Thanks, Som. Before I start responding to your question, let me take a moment to thank the organizers, ICC, and special thanks to Shwenkar for giving us this opportunity to be here. So, Som, we heard from our regulator, Mr. Manoj Kumar, on what went through and the genesis as the reason behind the formation of IIBX. And to put it in simple terms, I mean, Mr. Manoj has been very modest because if I have to give a background, he takes the credit for bringing in the 5 market infrastructure institutions. This has never happened in India. So हम सब BSc, MCX के साथ इंडिया में compete करते हैं, but इधर मनोज जी ने क्या किया, सब लोग को लेके आके, it is not just the exchanges, वो दोनों depository को भी 5 लोग को एक टेबल में लेके आके, so we got everything done in March last year, and within 6 months of we agreeing to come together, exchange का pilot भी चालू हो गया. So if I have to respond, Mr. Som, to your question, where are we? The systems are in place. So we have already finalized the product structure that we want to implement. हम बहुत सारे products सोच रहे हैं. पहला चीज क्या है? दुनिया में किधर भी आपको same day settlement का product नहीं है. अभी दुनिया में आप देखिए तो सिर्फ 2 spot exchange है gold में. London तो OTC है. So London we will not consider as a regulated bullion exchange. China है, Turkey है. पर चाइना में वापस आप देखिए उधर स्पॉट भी है और लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स भी है. सो हम अब जो करने वाले हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट के साथ compete करेंगे. अभी ये मार्केट सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, इट इज ऑल्सो फॉर ग्लोबल प्लेयर्स. आप ग्लोबल बैंक्स अभी मिस्टर साहा हैड रिस्पॉन्डेड टू योर प्रीवियस क्वेश्चन, ज्वेलर्स को क्या बेनिफिट है. अभी ज्वेलर्स कैसे माल उठाते हैं, बैंक से बात करते हैं, स्पॉट में ले सकते हैं, नहीं तो जीएमएल में ले सकते हैं. अभी बैंक जो प्रीमियम बोलेगा, एचडीएफसी बैंक बोलेगा 70 सेंट्स, एस बैंक बोलेगा $1. अभी जो ज्वेलर का साइज के हिसाब से, उन लोग का रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बैंक से डील कर देगा. बट अभी एक्सचेंज आने के बाद आपको पता चलेगा एक सिंगल प्राइस 1820, 1920 सब डॉलर टर्म्स में हम वी विल ट्रेड इन कोटिंग ट्रायंस में रहेगा जो इंटरनेशनल प्राइस के हिसाब से. बट हम 1 किलो का मिनिमम क्वांटिटी रखने वाले और 100 ग्राम्स के लिए 100 ग्राम्स विल बी द मिनिमम क्वांटिटी. सो आप जो प्राइस स्क्रीन में दिखेगा वो प्राइस आपको मिल जाएगा. इसके लिए आपको सिर्फ एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा. नहीं तो मनोज जी ने अगेन क्रेडिट आईएफएससी अथॉरिटी को देना चाहिए. वो लोग गवर्नमेंट से इंटरेक्ट करके एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया, क्वालिफाइड ज्वेलर्स. इसका मतलब क्या है, आज के डेट में जो भी सोना इंडिया के अंदर आ रहे हैं वो सिर्फ बैंक्स आर अलाउड टू इंपोर्ट, बैंक्स एंड यू हैव नॉमिनेटेड एजेंसीज. ये फर्स्ट टाइम एक क्वालिफाइड ज्वेलर्स को ये प्रोविजन दिया हुआ है. एक क्वालिफाइड ज्वेलर्स का मतलब क्या है, जो बुलियन में ज्यादा काम कर रहे हैं, ज्वेलरी में ज्यादा काम कर रहे हैं, वो 90% ऑफ बिजनेस ये दोनों चीज से आ रहे, बुलियन एंड ज्वेलरी, एंड उसका नेटवर्क 25 करोड़ है. वो लोग अभी IIBX से सीधा रजिस्टर करके ट्रेड करने के बाद मेटल इंडिया को लेके जा सकते हैं. सो अभी सिस्टम्स के हिसाब से सिस्टम्स रेडी है, एक्सचेंज रेडी है, डिपॉजिटरी रेडी है, एंड वॉल्ट भी रेडी है. We have close to 20 to 25 qualified jewelers who are registered with us, and we are also talking to a lot of supplier banks. When I say supplier banks, I'm referring to ICBC, JP Morgan, Standard Chartered. So ये सब लोग भी आके exchange में माल उतारेगा. So when they are selling, all the qualified jewelers and whoever is registered with us can actually take the metal. Thank you, sir. Thank you, Nagendra.
So Shivankar, I want to ask you something. You're sitting in Calcutta. Clearly, as I see it, I don't know your balance sheet. You will be wanting to be one of those qualified jewelers, and you will definitely qualify for that, I guess. What are the questions that come in your mind when you hear about this exchange initiative? What are the questions? I mean, on behalf of the jewelers here and those who are not able to attend, what are your questions? थैंक यू सर। जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि गोल्ड वहाँ पे एक वेयरहाउस में रखा हुआ रहेगा। मैं जब गोल्ड खरीदूंगा, आज बैंक को मैं बुलियन डीलर को फ़ोन करके बोलता हूँ प्राइस कितना है, जो मेरे को समझ आया कि प्राइस एक स्क्रीन में दिखेगा, एंड मैं फिर बुकिंग क्या, आई एम आस्किंग वेरी बेसिक लेवल में, ठीक है, कि कंप्यूटर में जाके कुछ बटन दबा के बुकिंग करना है या कोई एजेंट रहेगा जिसको फोन करके प्राइस वाइज करूं और बुक हो जाएगा, कैसे, और मिनिमम 100 ग्राम्स में हम लोग बुक कर सकते हैं। सो वो बुकिंग कैसे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, बेसिक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, पेमेंट कैसे करेंगे? मैं बैंक से आरटीजीएस एनईएफटी करूं तो जैसे आपने बोला डॉलर टर्म्स में, तो जब एज अ मोर ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलर हम लोग डॉलर में प्राइस फिक्स करते हैं और फिर आईएनआर का जो करेंसी एक्सचेंज चल रहा है उसको फिक्स करते हैं, करके फाइनल प्राइस आ जाता है। तो यहाँ पे तो जो स्क्रीन में दिखेगा वो डॉलर में दिखेगा, तो जो भी लेवल ऑफ ज्वेलर है उनको फिर समझना पड़ेगा दिस इज डॉलर प्राइस, ये है एक्सचेंज प्राइस, एंड आई एम बुकिंग इट टुगेदर, और मैं आईएनआर का एक प्राइस वो अप डाउन करता रहेगा। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड में, जब बैंक्स लोन में जब हम लोग गोल्ड लेते हैं तो यू कैन जस्ट फिक्स द गोल्ड प्राइस सेपरेटली एंड देन फॉरवर्ड करना, ये जो ऑप्शन रहेगा। इसमें तो ये स्पॉट एक्सचेंज है, सो ये जो भी अभी जैसे बुलियन डीलर से प्राइस फिक्स किया, पेमेंट दिया और डिलीवरी आ गया, वैसे ही रहेगा कि कोई फॉरवर्ड का सिस्टम रहेगा। फोर्थ क्वेश्चन इज द फैक्ट दैट मैं बैठा हूं कलकत्ता या मैं बैठा हूं कोई डिस्ट्रिक्ट टाउन दुर्गापुर में, शिलीगुड़ी में या कहीं पे भी, और ये गोल्ड रखा हुआ है गिफ्ट सिटी में, तो मेरे पास जो गोल्ड लेके आएगा कैसे ले आएगा, या कहीं पे डिलीवरी में कहाँ पे लूंगा, वहाँ पे क्या एडिशनल कॉस्ट मिल सकता है। ये 4-5 क्वेश्चन तो इन ऑपरेशनल लेवल है। फ्रॉम अ फाइनेंशियल लेवल आप जो बोल रहे हो कि प्राइस will be, there is a benefit, there is a transparency, we can be price influencer। मेरा जितना अंडरस्टैंडिंग हो रहा है कि इंडिया सब हम लोग एज अ बायर मिलके, जब मार्केट डाउन है तो हम लोग नहीं खरीदेंगे, वो इंटरनेशनल मार्केट देखेगा और वी कैन स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस। या तो जब डिमांड सडनली आ रहा है, एक सिस्टम में विद डिमांड्स को डेटा कैप्चर करके सडनली वो प्राइस बढ़ना चालू हो जाएगा। सो इन अ वे इंडिया का मार्केट डिमांड, कंज्यूमर डिमांड के साथ साथ वो प्राइस में हम लोग इम्पैक्ट एक, बिकॉज द डेटा इज गेटिंग कैप्चर्ड इन वन सिंगल सिस्टम, इसी आधार पे प्राइस इन्फ्लुएंसर हम लोग बन पाएंगे। सो दैट इज अ वेरी वेरी ब्रॉड बेस, मतलब ये मैक्रो लेवल में है। इंडिविजुअली वी एज स्मॉल पीपल विल नॉट बी एबल टू बेनिफिट इंडिविजुअली, बट इज देयर अ बेनिफिट? मैं क्या मेरा लोकल बैंक से अगर लूं तो उससे क्या मेरे को कुछ बेटर प्राइसिंग मिल सकता है, या इंटरनेशनली लोग जो बेचेंगे वो लोग क्या थोड़ा डिस्काउंट करके बेचेंगे? सो मैंने तो बहुत सारा क्वेश्चन बोल दिया, बट I think it is very, very good, because this is exactly what I wanted. Now I'm going to just, my job is easy. I can just channelize it to Nagendra. Nagendra, before you answer one or two of his questions, I want to ask you, these kind of questions are going to be very many, and even small jewelers will have. What is the process you are going to follow to address these questions in various regions first? Then you can take up one or two of what he said. I can only tell you, Shivankar, before he says, all these questions, see, ultimately, IIBX and domestic exchange, it is meant to benefit India and the jewelers, and also bring transparency, reduce risk, as the regulator said. Counterparty risk is not there. So you will get better bank loans, because they know you have purchased gold. Today, when you take a bank loan, whether you have bought gold or not, the banker doesn't know, because it is OTC market. So there are many, many benefits, but I want to ask Nagendra to answer them, and then I will come back to you. One thing, before Nagendra sir answers, ये काउंटर पार्टी रिस्क जो है, मतलब it sounds
वेरी ये मैं जस्ट सबके लिए बोलना चाहूँगा कि आज वी वर जस्ट डिस्कसिंग दैट बैंक्स अभी भी ज्वेलरी इंडस्ट्री को या बुलियन को बहुत ही डाउटफुल अवस्था में देखता है. बट द मोमेंट वी एज एन इंडस्ट्री स्टार्ट सेइंग दैट हम लोग IIBX से गोल्ड ले रहे हैं या ये बिल जो है ये IIBX का बिल है, तो द मोमेंट बैंक्स का ट्रस्ट टुवर्ड्स द इंडस्ट्री एंड टुवर्ड्स द कंपनी विल बिकम हायर एंड बैंक्स उसको फंडिंग और इजी तरीके से दे पाएगा. सो इट बिकम्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट. दैट इज व्हाट काउंटर पार्टी रिस्क का हो जाएगा, जो इट इज अ जेन्युइन सोर्स एंड वे कोई मतलब बिल खाली फॉल्स नहीं है. राइट नंबर. और लास्ट जो क्वेश्चन में मैं ऐड करना चाहूँगा कि IIBX में तो आ रहा है, ये क्वेश्चन मैं एक्चुअली प्रैक्टिकली पूछा था टू IIBX ये कि वो तो विदाउट ड्यूटी आएगा टू गिफ्ट सिटी. तो जब गिफ्ट सिटी से डोमेस्टिक एरिया में कोई लेगा तो वो ड्यूटी भरना का एक प्रोसेस रहेगा, वो भी एक इम्पैक्ट है और वो उसका भी एक आंसर चाहिए. जो हाउ डू वी ब्रिंग इट आउट फ्रॉम गिफ्ट सिटी टू DTA डोमेस्टिक टैरिफ एरिया. So over to you, Nagendra. So, Som, to answer to your first question, Mr. Ashok Gautam has taken over as an MD and CEO of IIBX. It's been more than a month. And in the last 1 month, what we have done is, I mean, he is extensively engaged with the entire ecosystem. I mean, we have had multiple calls with a couple of associations. And as we speak, what we have intended to do is, we will do road shows in each of the key metros. Each of the key metros and cities where we feel that the bullion fraternity is on the higher side. So that way, what we wanted to ensure is that, we work with the industry, we hear the industry and ensure that, all their queries with respect to how the operational framework is set up here gets completely explained and all the issues get resolved. That's on the first part, as how we intend to reach out to the ecosystem. The second thing is on the query raised by Mr. Shwankar saying booking kaisa karega. So today, just the way you buy a stock or you do futures on any of the commodity exchanges, right? You will be given a trading front end. So the trading front end will be connected, I mean, to our centralized system here, just the way any other exchange operates. So you will see the prices of all the contracts. It can be a cash contract. When I say cash, it's the same day settlement. It can be a T+2 contract, which is a spot, or it can be a Nagendra, Hindi, if you can. So, okay. So हम क्या करने वाले IIBX में सब clients को एक trading system देगा, हम देने वाले हैं. वो ट्रेडिंग सिस्टम में आप अभी कैसे फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं आप और स्टॉक खरीदते हैं, आपको सब कॉन्ट्रैक्ट्स का भाव दिखेगा. सब कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब सेम डे सेटलमेंट जो होने वाला है उसका भाव दिखेगा, 2 दिन के बाद जो सेटल होएगा उसका भाव दिखेगा. सो आपको कभी एक सिंगल प्राइस ही दिखेगा. अभी आप जब बैंक से ट्रेड करते हैं ना, शुभांकर जी बोल रहा था आप बैंक से बात करना है, रुपी डॉलर का रेट लेके एक बार फाइनलाइज करना पड़ेगा. इधर तो इंटरनेशनल प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखेगा, वो ट्रायंस में रहेगा, डॉलर टर्म्स में रहेगा. आपको पैरेलली इफ यू नो द रुपी डॉलर रेट, आप इमीडिएटली स्क्रीन में इफ यू बाय समथिंग एट 1927, आप 10 किलो लिया, इसका मतलब क्या है, आपको 10 किलो का पैसा IIBX को ट्रांसफर करना पड़ेगा. सो अशोक जी और हम सब बैंक से बात कर रहे हैं क्योंकि इधर RTGS और NEFT is only for the onshore jurisdiction, but आपका डोमेस्टिक से इधर पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा. That process is being worked out. So इसमें seamlessly इधर आप ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन किया हो तो आप सीधा ब्रोकर का अकाउंट में पैसा आ जाएगा. नहीं तो क्वालिफाइड ज्वेलर को मनोज जी ने क्या अच्छा तरीका निकाला, आप क्वालिफाइड ज्वेलर्स भी मेंबर बन सकते हैं. आपको इसमें 2 तरीके के ऑप्शन है. आपको लिमिटेड पर्पस मेंबरशिप भी दिया हुआ है, मतलब आप शुभंकर जी वांट्स टू बिकम अ ट्रेडिंग मेंबर, वो इधर ऑफिस खोलने के लिए जरूरत नहीं है. शुभंकर जी कलकत्ता से हमारा मेंबरशिप लेके कलकत्ता से ट्रेड कर सकते हैं, बट वो माल क्लियर करने के लिए एक क्लियरिंग मेंबर का जरूरत पड़ेगा इधर गिफ्ट सिटी में. सो नहीं तो शुभंकर जी क्लाइंट बन के किसी ट्रेडिंग मेंबर के साथ ट्रेड कर सकते हैं. वो जो भी बुक किया है, स्क्रीन में देख के प्राइस बुक किया है, बाई किया है, वो ट्रेडिंग मेंबर को ट्रांसफर करना पड़ेगा.
हम शुरुआत में क्या करने वाले मिस्टर सोमसुंदरम इज दैट हम सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा. स्पॉट मतलब सेम डे सेटलमेंट. बट हम IFSCA से ऑलरेडी डिस्कशंस में है. हम ब्लॉक भी कर सकते हैं. ब्लॉक मतलब एक स्पेसिफिक विंडो को लंडन एम फिक्स के टाइम के हिसाब से, PM फिक्स के टाइम के हिसाब से हम ब्लॉक विंडो ओपन कर सकते हैं. GML का भी डिस्कशंस हो रहे हैं. एंड फॉरवर्ड्स करने के लिए अभी देखिए शंघाई में बुलियन एक्सचेंज में डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट का एक प्रोविजन है. मतलब लॉन्ग डेटेड कॉन्ट्रैक्ट. कोई अभी GML में माल लिया, उसको वापस इमीडिएटली हेज करना है तो इधर वो प्रोविजन आएगा. वो हम जो भी कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करना है वो इफ्सका का परमिशन के बिना लॉन्च नहीं कर सकते. बट ये सब चीज जो भी मैं बोल रहा हूँ वो GML का, ब्लॉक ट्रेड का, डिफर्ड कॉन्ट्रैक्ट का डिस्कशंस ऑलरेडी चालू है. एंड इफ्सका का सपोर्ट इतना, I think I'll say that in English, Mr. Som, because I'm not able to get the right words in Hindi. So what I wanted to say is that the regulator here is much more forward-looking. I mean, they are appreciating innovative ideas, innovative products. So that way, if the industry feels that there is a specific need or an ask which has to come in, so that it brings a value to the entire ecosystem, I think the regulator is more than happy to welcome those suggestions and get it implemented. Thank you. And the last point, so on the customs duty part, again we are building an interface with the SEZ online where all the transaction details will go and the customs duty has to be paid. So there are a lot of बहुत सारा innovation उधर चल रहा है. Customs duty क्या होना चाहिए? Till those things come into play, it will be as per the existing tariff value structure. So once you pay the tariff value duty, you will be able to take the metal out of the skip zone. Thanks, Nagendra. Thank you. As I said, yes, sir. See, why I am intervening is कि जो मैं हिंदी भाषी हूँ और आप मुझे हिंदी में नहीं बोलने दे रहे, और नागेंद्र जो हिंदी नहीं जानते, आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हो हिंदी में बात करें. तो अभी 2-3 प्रश्न है जो नागेंद्र ने शायद रिप्लाई नहीं दिया, बिकॉज वो उनको शायद हिंदी में नहीं समझा पा रहे होंगे, इसलिए उन्होंने नहीं कहा. यहाँ पर जो सप्लाई का सेंटर होगा वो क्या होगा? क्या गिफ्ट सिटी से ही सब कुछ आएगा? ऐसा नहीं है. हम लोग बहुत एडवांस स्टेज में सरकार से बातचीत कर रहे हैं जहां पर कि डिस्ट्रीब्यूटेड सेंटर्स बनाए जाएंगे एट वेरियस लोकेशंस, और हमारी कोशिश है कि जो आज की डेट में एग्जिस्टिंग लोकेशंस हैं उनको ही डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बना दिया जाए. तो जैसे ही ये हो जाएगा तो आपका अगर कलकत्ता में कोई डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है तो कलकत्ता के लिए जितना भी गोल्ड की डिलीवरी होगी वो उसी सेंटर से हो जाएगी. तो हमारी कोशिश ये है कि इस पूरे प्रोसेस में आप सबको ये लग रहा होगा कि हम कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं. ये नया जरूर है, लेकिन हम इसमें प्रोफेसर साहे के विजन से गाइड हैं कि हमको इसमें डिस्ट्रप्शन नहीं करना है. तो हमारा प्रयास है कि हम नयापन भी लाएं और डिस्ट्रप्शन इसमें बेयर मिनिमम करें. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि आप सब लोग इसमें आश्वस्त रहें कि आने वाले दिनों में बहुत जल्दी ही हमारे गिफ्ट सिटी में ही सेंटर नहीं होगा, सेंटर देश के हर इंपॉर्टेंट सिटी में होगा जहां से आज आप गोल्ड जो है ले रहे हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. दूसरा जो आपने कहा कि काउंटर पार्टी रिस्क, यहाँ काउंटर पार्टी रिस्क का जो मतलब है वो ये है कि हमारे मैकेनिज्म में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है. क्लियरिंग कॉर्पोरेशन आप ट्रेड कोई भी करे, क्योंकि पूरा सिस्टम एनोनिमस है, किसने किसको बेचा नोबडी नोज, किसने खरीदा नोबडी नोज. तो जो हमारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है जो एक सेपरेट बॉडी है जिसको अभी हमने IIBX के अंडर में बनाया है, और आने वाले दिनों में हम उसको सेपरेट बॉडी बना देंगे, अलग कर देंगे, क्योंकि हम रिस्क और ट्रेड को सेग्रीगेट करना चाहते हैं. तो उसका ये रोल है कि इर्रेस्पेक्टिव कि किसने किसको बेचा है वो बीच में खड़ा रहता है और वो ये इंश्योर करता है कि आपने जिस चीज को खरीदा है वो चीज आपको समय से डिलीवर हो. तो ये काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब है. मुझे किसी से लेना नहीं है कि मिस्टर सेन ने सोम को बेचा है, इससे मतलब नहीं है. वहां क्लियरिंग कॉर्पोरेशन खड़ा रहेगा और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन इंश्योर करेगा कि डिलीवरी मिस्टर सोम को हो जाए. तीसरा जो एस्पेक्ट है वो है
कि इसमें ड्यूटी का सिस्टम क्या होगा। हमारा प्रयास है जैसे ही आप गोल्ड को इंडिया में ले जाएंगे, बिकॉज हम तो जो है एसईजेड जोन है, यहाँ पर ड्यूटी नहीं लगती है, ड्यूटी एग्जेम्प्टेड है। जैसे ही हम यहाँ से गोल्ड को इंडिया में ले जाएंगे, इट इज लाइबल फॉर ड्यूटी। और जो आज का ड्यूटी स्ट्रक्चर है, हमारी बहुत एक्टिवली बात हो रही है कस्टम अथॉरिटीज के साथ कि वो हमारा जो एक्सचेंज का प्राइस है उसी प्राइस के बेसिस पे ड्यूटी लगाएं। आज की डेट में तो एक टैरिफ वैल्यू सिस्टम है, उसके बेसिस पे वो लगाते हैं, हर 15 दिन में वो बदलता रहता है। तो हम एक स्टेप और आगे जा रहे हैं कि जितने रेट पर आपने गोल्ड को खरीदा है और उस रेट पर अगर आप गोल्ड यहाँ से सेंटर से लेकर जो है डोमेस्टिक एरिया में जा रहे हैं तो आप उस पर ड्यूटी देंगे। तो ये सारे प्रोसेसेस ऑन हैं और गोइंग फॉरवर्ड ये प्रोसेसेस और सिंप्लीफाइड होंगे। और जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आई थिंक नागेंद्र ने उसको कोशिश करी है एड्रेस करने की, वो ये था कि हम खरीदेंगे कैसे। कलकत्ता में बैठकर एक ज्वेलर कैसे खरीदेगा। अगर जो ज्वेलर कम्युनिटी वहां बैठी हुई है उनको अगर अच्छी तरीके से वो ये जानते होंगे कि आज भी जब ट्रेडिशनल ज्वेलर शॉप पे आप जाते हैं तो वहां एमसीएक्स का भाव देखकर ही वो भाव फिक्स हो जाता है। सिमिलरली आपको जब खरीदना है तो आपका जो डॉलर रेट है, आप अपने ब्रोकर को फोन पर भी बोल सकते हैं कि भाई मुझे गोल्ड खरीदना है, आप बताओ क्या भाव चल रहा है। तो जो हमारा IIBX का मेंबर है वो आपको इमीडिएटली बताएगा कि ये भाव है। ये बिल्कुल मैकेनिज्म ऐसा ही होने वाला है जैसा सिक्योरिटीज मार्केट में होता है। आज अगर आपको कोई शेयर खरीदना है तो आप अपने ब्रोकर को फोन करके बोल देते हैं और ब्रोकर आपको बता देता है ये भाव है, इस भाव पर मैं शेयर खरीद रहा हूं। तो सेम सिस्टम हम यहाँ पर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये 5 कोर प्लेयर्स को अपने साथ लाया है ताकि पूरा का पूरा ट्रेडिंग सेटलमेंट सिस्टम जो है एकदम सीमलेस तरीके से काम करे। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आपके प्रश्नों का कुछ हद तक जो है निराकरण कर पाया हूँ। Thank you very much, sir. I think when have you last had a regulator answering questions like this? So that itself must tell you that International Bullion Exchange for India, it is like having the London market close to your home. If the next room is the London market, yes, you know about London markets today, but it is still second-hand information for all of us. When the London market is in the next room, what happens? You are actively participating in this market, knowing what's happening in that market. That's what IIBX does. And it is beyond what Indian importers, it will also deal with a lot of players globally. So I think we have just run out of time. So thank you very much. Sir, all the three senior panelists who have joined us digitally and Suvankar, I mean, there will be more and more questions. As Nagendra said, the CEO of the Bullion Exchange who has just joined, he will also be addressing queries. And you have seen Professor Arvind Sahai, Nagendra. You can write to any of us, ask your questions, but my request is get to know what is happening on the bullion trading. It's very important for the industry. It is for the good of the industry. Thank you very much with those words, and I will now call this session to an end. And thank you, Mr. Manoj Kumar, Arvind, and Nagendra. Thank you for taking time. I think this is the first one in Calcutta, and I'm very sure you will get a lot of questions from the industry here. Can I take one small question from yes, there is one question which we will only take. One. Yes, very quickly. I want to know whether it would be a kind of warehousing facility over there in the Ahmedabad, and if I buy, then I will have to file the bill of entry. See, that is as Mr. Manoj Kumar explained and Nagendra explained. Yes, there is a seamless way you can get gold, and it is not necessarily in Ahmedabad, as he was trying to say. There will even be an IIBX vault here, which is that's okay. customs paid. Even if the vault is here, if I am to file the bill of entry, I am not going to take that hassle because I am to pay out-of-pocket expenses at the customs. Well, as I said, that is a question. I will park it with Nagendra. It will be a seamless clearance on customs. That is the principle we are working on. Seamless, not the See, the whole idea is not to take the existing system and just replicate it. That's not going to help. Okay? It has got to be a lot better, and that's what he mentioned, seamless.
many of them are work in progress. So you may have to probably wait and listen to when the IIBX CEO comes, keep your firepower for him. Because also. in my view, if this trade is to succeed, you will have to take care of this problem. I'm absolutely straight away channeling it back to the panelists there. Bill of entry, issues, cost, I think you'll have to take care of that. Absolutely, we will take care of that. Not a problem. Okay. All I can say is you saw the regulators' intention, being part of such open, transparent discussion at the beginning. How many times have a regulator just stepped in and said, okay, even in the initial stage, I will take queries. Okay. So I think that shows what the intent is. When we go back also, we should go back with very clear, this is what we want and this is the benefit for us. So that kind of a stuff. But we will have more opportunities to discuss. The idea was to introduce IIBX to you, which is a very, very big initiative, particularly for people in Calcutta. You are a big manufacturing center, recycling center, so you should learn a lot more about it. So thank you all very much with those words. I will just, close the session. Actually, there are many questions. May I make a suggestion that if the questions can be collected and mailed to the concerned person? Somji, Yes. Rajesh Nilkanta here from BBC Logistics. Just 2 minutes to answer Prakashji's question. From a logistics perspective, even today, whatever is the customs clearance costs, related expenses, etc., they are all coming to the buyer as a landed cost, whether the banks are paying for it or the nominated agency is paying for it. So eventually that cost is anyway being added into the total landed cost of the metal purchase. Absolutely. So eventually when this happens as a qualified jeweler, the cost only can come down because there's no layering of it. Exactly. So it's going to be a bigger benefit if it is for a direct import from any of the IIBX vaults. Absolutely. See, I wasn't aware of the details, but that's why I laid out in principle. Everything that happens with an exchange ought to be better than what it happens currently. Absolutely, All right? sir. That's the fundamental principle. If it is not, we have a reason to go back and ask questions. So that's the way I will leave it. Any number of questions, please. As I said, you saw all the people. You can write to us. Go into IIBX. The CEO will be here. So thank you very much. Thank you so much. And now we move on to the next session, which is quite delayed. And once again, there are participants who are waiting for us virtually. So we come to two of the key issues which we are going to discuss here in the pre-lunch session, which is trust and integrity. I suppose this has to be debated at length. And may I call upon the dais Mr. Vinod Bamalwa, who is the chairman of the ICC National Expert Committee on Jewellery and Lifestyle, and the co-chair is also requested to join him. Mr. Shripal Dholakia, Director, Shrikunj AI Limited, is going to be the session moderator. Along with Mr. Dholakia, we would have on the dais, in fact, Mr. Vinod Bamalwa and Mr. Dholakia would be on the dais, and also Mr. Rajesh Nilakanta, who is the Executive Director and CEO of BVC Logistics. So the three of you would be on the dais, and joining us online are Mr. Edward Asher, Executive Director, World Diamond Council. We also have Ms. Vaishali Banerjee, Managing Director, India of Platinum Guild of India, and Mr. Sachin Jain, Managing Director, De Beers India. So 3 people have already joined us virtually, and the 3 of you would be on the dais. Mr. Shripal Dholakia is going to moderate this session. So some of the issues that we are going to discuss now are quality and insurance for platinum, the Kimberley process, certification of diamonds and its importance. These are some of the subtopics which would come up. Rise in diamond price, manufacturing with
this would be an expert speak. So, over to Mr. Dulakia. Hello, everyone. And so right now the topic is trust and integrity, which is based on our jewelry. It is most important, the trust and integrity, quality assurance, Kimberley process, certifications in diamonds, rise in diamond price, manufacturing growth with the help of the logistic people. So would like to connect with Edward. Hi, Edward. How are you? I suppose, Edward, you are on mute. Hello. Edward, you are on mute. You can unmute yourself. No, I'm not. Yeah, you are Can you now. hear It's me? fine. Hi, how are you? I said good morning from Amsterdam, the Netherlands, and good afternoon to you. Good afternoon. And hi, Sachin bhai. शिवल भाई, thank you very much. बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सबका. It's a big pleasure and honor for me to be here again in the 4th ICC General Jewellery Summit. Thank you very much. Hi, Vaishali ji. Hello, everyone, and thank you for inviting me. I look forward to this session. Okay. So, Edward, I would request you to throw some light on Kimberley process and the certification and trust and integrity in diamonds. Those are three questions that each take a long time. Let me concentrate on the Kimberley process. The role of the World Diamond Council, as well as the role of the Kimberley process, in short KP. I apologize for not being there in person, but I just recovered from COVID. And the World Diamond Council is representing the whole diamond industry, meaning the mining companies, the polishing industry, not only, but of course mainly from India, wholesale, rough and polished, retail, jewelers, famous jewelers, large jewelry chains in the world, and smaller companies as well, and independents, service providers like banks and insurance companies and transportation. So we are an organization that is fully represented the whole diamond industry. The Kimberley process consists out of 85 governments, a representative of the diamond industry, that's us, as well as civil society, a representative of various non-governmental organizations, NGOs. The status is that governments decide, and they have to decide in consensus. The civil society and the diamond industry are observers to the KP and also advisors to the KP. So we don't vote, but we give strong advice, and we operate in various working groups, which are very important for the functioning of the KP. The system of the KP is under the Security Council of the United Nations, and it was established, the KP, in 2000 and the Kimberley Process Certification Scheme in 2003. Rough diamonds, which are exported from a country or imported in another country, needs a Kimberley certificate from the official government of the exporting country. The importing country is checking the KP certificate, and once that is approved, the rough is free to travel within a country, or, for instance, in Europe, within all of Europe. But it has to come in an official
Kimberley process procedure. So direct Kimberley is only rough diamonds, and the definition is conflict diamonds, and conflict diamonds is at present defined as diamonds in the hands of rebel movements. The discussion in the Kimberley process over the last 5-6 years, or maybe even a little longer, is very strongly about, can we expand this definition, including human rights, social rights, environmental issues, community building, and differentiation between natural diamonds and synthetic diamonds. The KP deals only about natural diamonds, of course. So this is how the Kimberley process works, and although we all have some criticism about it because of the limited scope, it is the basis on which the whole rough diamond industry is built. Because of the criticism, the diamond industry has taken initiative to build on top of the KP, meaning the KP is the basis for everything in the rough diamond industry. And on top of that, we have built systems to enhance the due diligence and build a more stricter control of our responsible supply chain. And that is, number one is the system of warranties from the World Diamond Council, recently revised, that each company, big or small, can do. It doesn't take much time, but it gives you due diligence and it shows that you are involved and get the knowledge to handle your business in a responsible way. And number two is the Responsible Jewellery Council, which is offering audits of the operations you have to fulfill standards and to fulfill the code of practices of the Responsible Jewellery Council. The RJC is a bigger organization, having today about 1,600 members, and it is also very much concentrating on sustainability and gender diversity. Number three is the private companies, like Mr. Jain can tell about what De Beers is doing, how Rosa is doing things, and other mining companies, but also other retailers like Signet or Chow Tai Fook. They develop their own systems. And it is all systems to enhance consumer confidence, that the diamonds have been mined in the correct way, polished in the correct way, and that the diamonds bring well-being to all the people involved. So that is the KP, which is part one of what I would like to explain. Part two will come later when we talk about the present market situation and the sanctions that have been imposed. So for now, this is what the KP and the WDC is about. Thank you. Thank you so much, Edward, for giving us a brief idea about the Kimberley process. And now my question would be to Vinod Bhai, sitting next to me. Vinod Bhai, what do you see the year 2021-22? How do you find it, as a fluke or a trend? Post-pandemic rise जो हुआ है in diamond price में, jewelry में, gold में, how do you feel ये एक fluke है कि ये trend बना है अपनी industry के लिए? शिवपाल, डायमंड प्राइस की अगर अपने बात करें तो पिछले कई सालों से डॉलर टर्म्स के अंदर में डायमंड के प्राइसेस ऑलमोस्ट स्टेबल थे. इंडिया में डॉलर रुपी एक्सचेंज के कारण अपने को लगता था कि यहाँ पे थोड़े भाव बढ़ रहे हैं, पर बाहर में तो नहीं बढ़े.
मैं इस बढ़े हुए भाव को मैं एक वेलकम साइन मानता हूँ, और मेरा लॉजिक ये है कि आज के 5 से 10 साल पहले हम सब पैनिक कर रहे थे कि सिंथेटिक डायमंड आएगा और हमारा बिजनेस खा जाएगा। तो इस बढ़े हुए भाव में भी आज जब मार्केट के अंदर में ट्रेडिंग हो रही है, सामान बिक रहे हैं, तो ये मैं मानता हूँ कि वो जो फियर फैक्टर था कि हमारा बिजनेस चला जाएगा, ये आ जाएगा, और अब कंज्यूमर के भी ये एक्सेप्टेंस आ गई है कि सीवीडी की तरह ट्रीट होगा, ज़िरकॉन की तरह ट्रीट होगा, रियल डायमंड की तरह ट्रीट होगा। सो मैं इसको एक वेलकम स्टेप मानता हूँ। क्या इतना दाम बढ़ना चाहिए? इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, पर क्या मार्केट में एक्सेप्टेंस इमीडिएट आ गई है? नहीं, पर ग्रेजुअली इसमें आ जाएगी। एज इट इज़ माइनिंग बंद होने के कारण जो है अपने सप्लाई साइड में कंस्ट्रेंट्स हैं, स्पेशली बड़े पत्थर आज के दिन में भी बहुत लिमिटेड अवेलेबल है। और सिमिलर जो है गोल्ड भी जो है एक नेचुरल ग्रोथ इसका जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हर साल जो हो रहा है उस हिसाब से है। जो वॉर की सिचुएशन है उसके कारण जो थोड़ा सा अपसेट हुआ है, जो अपना एक नॉर्मल एक्सेप्टेड लेवल रहता है शायद उससे थोड़ा सा एक्सीड कर गया है, पर अभी भी जो कोविड के पीक के अंदर में जो लेवल था अभी भी उससे थोड़ा सा नीचे ही है। सो मेरे को लगता है कि ठीक है, ये बहुत जल्दी अब ये नीचे की तरफ शायद नहीं जाना चाहिए। थैंक यू विनोद भैया। एंड सचिन भाई, इस पे आपका क्या कहना है? बीइंग द DBS, the one of the biggest mining company, and you are being the managing director handling Forever Mark India. So आपका इस पे क्या कहना है यही पॉइंट पे कि 2021-22 जिस हिसाब से अभी विनोद भैया ने बताया कि जो रफ अवेबिलिटीज़ है वो थोड़ी इश्यूज है, और उसको लेके मतलब what can you express on this, सचिन भाई? सचिन भाई, you are on mute. Can you hear me? Yes, now we can. Yeah. So बहुत बहुत धन्यवाद इस क्वेश्चन पूछने के लिए। और विनोद जी के साथ मैं 100% समर्थ हूँ, क्योंकि ये जो डायमंड प्राइसेस एक हम लोग बोलते थे पिछले 10 साल में हैज बीन स्टेबल, एंड स्टेबिलिटी इज गुड इन अ मैनर, मगर ये है कि एक हमारे इंडस्ट्री में एक वैल्यू ऑफ एक जो एसेट क्लास रहती है उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स अ वेरी वेलकम मूव। हाउएवर अगर आप देखें कि अगर एक ग्रेजुअली चीजें ऊपर जाएं तो इट इज ऑलवेज मोर वेलकम्ड इन द सेंस दैट ये लॉन्जेटिविटी एक रहती है। अभी अगर आप पिछले 8 से 10 महीने में देखें कुछ ज्यादा स्पाइक कुछ हुए हैं, which I think isn't the best healthy way of how the price can go up or down. हमारा foresight ये है कि in the next phase of it you will see more stability. I mean, who knows what the outcome of the war will be, and I'm sure Edward you'll be able to throw some light on the developments that are happening on that area. मगर जो इससे कनेक्टेड मैं बताना चाहूंगा कि इंडिया में क्या हो रहा है। सो अगर आप सिर्फ 2021 एक ईयर को देखिए, historically, I mean, we have never ever seen the growth in the diamond consumption as you've seen. अगर आप देखें, America market is performed at about 32% growth, which is never happened. I mean, कई सालों से हम लोग 2 या 3% की ग्रोथ तो बहुत अच्छी मानते थे. That has been the level. अगर आप इंडिया मार्केट को देखें तो हमारी ग्रोथ करीब 20 से 22% पे हुई है, जो फाइनल नंबर्स अभी आ रहे हैं, एंड which is unprecedented. ये पहले नहीं हुआ है. अगर आप बहुत ही पहले जाएं तो करीब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ऐसा कुछ ग्रोथ एक मार्केट में देखा है. इसकी रीजंस कई हैं. इसके रीजंस एक ये है कि भाई और डायमंड्स होल्ड वैल्यू, जैसे अभी विनोद भाई ने बताया दैट देयर इज अ क्लियरर मोर डिफरेंशिएशन क्लासिफिकेशन बिटवीन लैब ग्रोन डायमंड एंड अदर कैटेगरीज. सो एक कंज्यूमर के दिमाग में और एक द मीनिंगफुलनेस ऑफ डायमंड इज गेटिंग मोर स्ट्रॉन्गर. और हिंदुस्तान का जो एक ट्रेंड ये चल रहा है फ्रॉम अ कंपनी लाइक De Beers, वन इज ऑफ कोर्स द हाई एंड, जो विनोद भाई ने बताया दैट देयर इज अ शॉर्टेज, बट जो
हमारी रिसर्च कहती है, वो ये कहती है कि the middle class consumer is gonna consume more and more diamonds. Daily wear will be accepting more and more diamonds, not only on the wedding class. So कई सारे ऐसे consumer based changes इंडिया में आ रहे हैं, और उसका जो बेस रहेगा वो रहेगा ट्रांसपेरेंसी, वो रहेगा कॉन्फिडेंस. सो जैसे पिछले सेशन में भी मैं काफी सारी चीजें सुन रहा था ऑन सम ग्रेट डेवलपमेंट्स that are happening in the gold supply and what that will mean. I think it will only get efficient. But even in diamond, I think clearly कुछ ऐसी companies हैं हमारे यहाँ, not all large scale or organized, but even independent jewelers, where transparency के साथ आज के जरिए के हिसाब से अगर आप customer को दे रहे हैं, then customer is coming. जैसे Mr. Edward had mentioned about the role of KP, which is the fundamental basis of our rough diamond business and exchange of diamond. I think evolving that further कि आज के कस्टमर को क्या चाहिए, आज के कस्टमर को चाहिए पर्पस, आज के कस्टमर को चाहिए सस्टेनेबिलिटी, all these things which is not just a buzzword. We all in the business will have to take steps कि अगर 2 साल बाद और साल भर बाद कस्टमर हमारे दुकान में घुसे और उसके ऐसे क्वेश्चंस हो तो हमारे पास एक आंसर रहना पड़े. So India will play an important role in the consumption of diamonds. Today अगर आप देखें पूरी global consumption के हिसाब से इंडिया इज अबाउट 7 to 8%, और हमारी प्रोजेक्शन ये है कि अगले 2 से 4 साल के अंदर दिस शुड कम सर्टेनली इन डबल डिजिट्स, बट वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ ड्राइवर्स इन द ग्लोबल कंजम्पशन ऑफ डायमंड्स. सो दिस इज माय व्यू. थैंक यू सचिन भाई. अभी राजेश भाई, सचिन भाई ने अभी बताया कि B2C क्लाइंट और मिडिल क्लास पीपल हैव डाइवर्टेड सो मच इन डायमंड बिजनेस, डायमंड बाइंग. सो मेरा क्वेश्चन एज ए लॉजिस्टिक्स आपसे ये रहेगा कि हाउ यू आर गोइंग टू प्लान अप योर स्ट्रक्चर फॉर B2C लॉजिस्टिक्स फॉर विद ज्वेलर्स. आपका क्या तरीके से, किस तरीके से आपकी तैयारी है और आप किस तरीके से सपोर्ट कर सकते हो B2C में एंटर करने के लिए? थैंक यू शिपाल जी. मैं एक्चुअली एडवर्ड जी का और सचिन भाई का स्टेटमेंट का भी मैं थोड़ा उस पर भी कुछ बात करना चाहता हूँ. जैसे मिस्टर एडवर्ड ने बोले थे कि RJC is one of the key certification bodies which has developed a set of a code of practices and chain of custody. मैं एक RJC ग्लोबल बोर्ड मेंबर होने के नाते ये भी बोलता हूँ कि भारत में ये जो अपना पैनल का सब्जेक्ट है, जो ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी, जो सच्चाई एंड निष्ठा जो है, सत्यनिष्ठा का जो ये है, ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की सर्टिफिकेशन से और बढ़ेगा. नंबर 1. नंबर 2, जैसे सचिन जी ने बताया कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स का एक रोल होता है. लॉजिस्टिक्स बीइंग वन ऑफ द की एलिमेंट ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन from the miners to the retail stage. If a logistics provider does not follow any of the tenets of trust and integrity parameters, then the whole thing can go for a toss. So having said that, I only would emphasize on the fact that as a logistics practitioner, we are always with our ears to the ground, and market की जो requirements है, customers की जो requirements है, उसी पे हम फोकस करके हमारा सर्विसेज भी डिजाइन करते हैं. कमिंग टू द सवाल जो आपने उठाया B2C के सेक्टर में, B2B में तो हम काफ़ी मैच्योर्ड ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हो या होलसेलर्स हो या रिटेलर्स हो, बोथ सिंगल स्टोर रिटेलर्स और चेन स्टोर रिटेलर्स. इनमें से थोड़ा बहुत मैच्योरिटी ऑफ ऑपरेशन है ऑलरेडी. They also understand the compliances that are required to be done, so legitimate way of doing business वगैरह. B2C सिनारियो थोड़ा अलग होता है because as a consumer उनको इसकी जानकारी नहीं होती है कि क्या क्या challenges होते हैं for a supplier, for a seller, online seller or a offline seller, and the challenges in the flow of materials from supply point to the consumption point through a logistics provider. तो हमने हमारा जो नेटवर्क जो हम डिज़ाइन करते हैं, जो अभी भी चालू है B2C में भी, वी सर्विस ओवर 12,000 पिन कोड्स अक्रॉस इंडिया. जिससे क्या होता है, कस्टमर को आज का डिमांड जो है, कोविड ने हमको सिखाया कि ऑनलाइन शॉपिंग इज बिकमिंग अ वे ऑफ लाइफ. So in every commodity segment there is a focus on online shopping, and
quicker deliveries in their residences. So उससे मद्देनजर रखते हमने हमारा नेटवर्क भी ऐसे डिजाइन किया है कि अभी भी हम 12,000 प्लस पिन कोड्स जिसमें ज्वेलरी कंजम्पशन हो रहा है वो सारा हम कवर करते हैं. इसके अलावा हम भी काफी कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं जिसका फायदा काफी कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स कैरेट लेन जैसे कंपनीज यूज कर रहे हैं जो बाय एट होम कॉन्सेप्ट जो है. तो एज ए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर हमारा काम इतना ही नहीं कि हम एक जगह से माल दूसरे जगह पे ले जाए बल्कि उससे आगे भी गए. हम कस्टमर्स के बिहाफ पे सेलर का माल लेके जाके उनको दिखा के we complete the process of sale. That also is another service that has come out of the COVID pandemic situation. So overall, if you see, logistics plays a very critical role in the supply chain of the industry, in the gems and jewelry, especially because of the values that one deals with. So iske hisab se we are continuing to keep innovating and we are already there ahead of the curve at this point in time, frankly. Thank you. Thank you, Rajesh ji, for throwing light on the logistic part. So, Vaishali ji, now it's to you. Sachin bhai ne jo topic uthaya for the middle class converting into the diamonds. So, platinum has always been the premium material, premium metal, a premium thing that jo jewelry industry think of karti hai. So, aapka kya कहना है on this? How platinum is going to reach the middleman house और आपका उसके ऊपर में क्या विचार है वैशाली जी? Thank you for the question. Okay, so let me just try and start a little bit to say, platinum, we talk to the young consumer. So that is first and foremost, that, from the time that we looked at India and from the time that we've been here, it has focused on the young consumer. And of course, as that consumer goes through their life's milestones, it becomes, those moments are platinum moments. Now, if we are talking about middle class, now, what is the definition of middle class? If you look at, so I would rather say it like this, that the preciousness of platinum is there and it will always be there. The imagery of platinum is aspirational. Today, platinum is available across different price points. So you can access a piece of platinum jewelry across price points. Platinum is retailed today out of tier 2, tier 3 cities. We have Shubhankar there. I don't know if he's still around there, but he will tell you that in tier 2, tier 3 cities, platinum is selling. Yes, it has made a start. There is work to be done because awareness, education, all that is an ongoing, sort of task for us. But it is no longer, a large city or a large metro phenomenon. Today, both availability of platinum, awareness of platinum, and the product is available for whoever wants and chooses to buy into the metal. Thank you, Vaishali ji. So, we just want to know, जैसे आपने बताया 2 tier 3 tier cities में platinum is more and more selling and more supportive out there. So, you again told me the younger generations are, more buyers of platinum. So, yes. Today topic of our also is on the trust and integrity. So, yes. As at PGI, what are your plans on digital certifications and consumer analysis, as well as the price point of the platinum? See, like gold, it is always, we can see the price on net or something like in MCX or something like that. So what are your plans for that also? We need some highlights on that. Okay. And it's a very important point that you talked about, this trust and transparency, because we are talking to the young consumer. This is an expectation. This is an absolute expectation, transparency, and quality, and assurance of quality. So,
the quality assurance program, the PD 950 program that was launched, I think now 2 decades back. So with the partners of PGI are all under this program, where it is a very thorough third-party based assurance program. So it's got a couple of pillars, and right from sourcing to production to the final product, which goes out into the retail store, and then it comes with the mark of PD 950, and it comes with a unique identification number and a card. So all of this has been going on for the last 2 decades, simply because at the end of the day, when the consumer is coming to that store and you're buying a piece of jewelry, you're assured that is 950, and that UIN number can be, so there's complete traceability, and that can be traced to the metal lot, and certification can be provided if there is a requirement for further certification. It also protects the industry, because today reputation is important, and all retailers, manufacturers, everybody wants to offer the best. So right from the get-go, we had put this in place. Now, if we talk about digital certification, yes. In fact, we should be coming out with that very soon, because the last 2 years we've been completely doing a back end, which is digitized. So whether it is the traceability, which is anyway digital, will be available to the consumer, as well as the certification. So I think what we want to do going forward is keep strengthening this program, because it's becoming more and more important. When we launched, it was with a simple need that the consumer did not know what platinum looked like, did not know how to test the purity of platinum. So it was answering a consumer need. Today, it is a very stated need of authenticity and transparency. So, whether it is supply source monitoring, whether it is production facility audit, whether it is the independent testing mandate, whether it's the compliance on the laboratories and audit and inspection, all these pillars we have currently, and we are just going to make it more robust going forward, so that anybody who has the PD 950 mark, whether it is the retailer, consumer, wholesaler, manufacturer, everybody can be assured that there is that the program behind it is robust. Now, if you asked me about pricing. So as I said, that today the platinum is available across price points, so you can buy into whatever kind of accessible price point or budget you have. Transparency of pricing, this is something that the guild cannot enforce. We are a guild at the end of the day. This is up to our partners, and to provide as much information that the consumer needs, and whatever will help the consumer make that decision and feel confident and secure in their purchase. As the guild, what we can do is help everything else. So whether it's the quality of the metal, whether it is the kind of design that goes across, the quality of production, everything is we work with our partners. But we cannot mandate a price. That is not possible. That is up to the industry, and I'm across board. Whether it's our retailers in any part of the country today are reassuring their customers with the fair pricing and transparency if they need it. Does that answer your question? Correct, Vaishali ji. Thank you so much for throwing the light on the rates of platinum to be managed, how to be managed. And now my question would be to Edward. Edward, we are talking about the certification, trust, integrity. So the question to you, can you show some light on SOW, system of warranties, what it is and how does it works, and does a diamond trader
manufacturer only need to enroll in SOW, or a normal jeweler also be a part of this program? Can you please throw us a light on that? With pleasure, thank you. The system of warranties exists already for a long time, but we are now introducing the revised system of warranties, which started in the Peace Day, September last year. We are all familiar with the declaration that we have on our invoices, stating where that the diamonds are coming from legitimate source. The system of warranties goes one step further. You will have to go to the system of warranties website, and you will find a link easily at the World Diamond Council website, which has just been renewed. There you go through the steps to come to the system of warranties, and each step about your own company and your knowledge. And it has expanded from only the way we did it in the past over the last almost 20 years into a wider knowledge base in which you will be brought step by step to fill in the questionnaire on the website. Once you have done that, you get a result which you can publish on your own website if you wish, and you can put the new declaration of system of warranties on your invoice. What we expect is that this system of warranties is being rolled out worldwide. Like if you look at Dubai, for instance, the MCC in Dubai has made it compulsory to do this exercise and put it then on your invoice. And we expect that the World Federation of Diamond Bourses will do likewise, and that in the next few years you see a wide rollout all over the diamond industry. Diamond industry, including jewelry industry, including wholesale, manufacturing, polishing, as well as retail. So like the old system of warranties, the revised system of warranties will be rolled out worldwide, and it will increase the knowledge base of the people who do it, of the diamantaire or the retailer, wholesaler, retailer, and shows that they have done their due diligence regarding the sourcing of the diamonds. So we are in the beginning of rolling it out. It is a very important system that will have an influence on the whole diamond and jewelry industry. And it will help retailers and wholesalers to show that they responsibly source their diamonds. And that's the system of warranties. So for the details, we have a system of a questionnaire and frequent questions, FAQ, but also we have a dedicated website, and we also have a dedicated help desk where people can ask their questions and get a professional help to fill this in. Actually, it's not very difficult, but it needs your attention. Thank you. Thank you, Edward. The question goes to Sachin Bhai. Sachin Bhai, what are the priorities of De Beers in the coming years? Would it be a diamond miner, a diamond manufacturer, a diamond trader, or diamond selling market in India? Very interesting question. Thank you. So, the reason why De Beers has been in the business for long is purely because the focus has been कि customer कहाँ जा रहा है, उसकी demand कहाँ आ रही है, क्या नए trends हैं, और for all the things that De Beers does, I think the fundamental focus has always been on the consumer, because जो आपने बोला manufacturing या हमारे brands हैं, we have 2 jewelry brands called De Beers Jewelers and De Beers Forever. They take care of certain part of what we do. As a company, हमारा mining का जो operation है, that results in about 32 million carats of diamonds.
And all that we do fundamentally is also to market and to sell the 32 million carats. So essentially, that's been the focus. और इंडिया के रूपांतर में ये बोलना चाहूँगा कि जैसे as I mentioned to you, India is about currently 7% of the global demand of diamonds. China is about 18-19%. America still is 50% less, right? लेकिन ये this is our chance, and I can take the name. I mean, I can say it's a platinum chance since Vishali is here. I would say it's our chance to make India grow, and this growth will not be led by everybody in the business. People will have to change the businesses, like Mr. Edward mentioned, around authentication in certain way. Really keeping in mind where the consumer is going. And a couple of trends that I would see is, first and foremost, design is evolving, right? So we need to be true to that design. Certification is evolving, where we all understand that different certificates have different meaning, or value associated to them. You do need to figure it out as to आपका brand या आपके नाम के पीछे किसका होना चाहिए नाम, and transparently with confidence provide diamonds to the consumer, and they will hold long-term value, because this is our chance. This 7% is certainly going to become 15-20%, like in the next decade for sure. The drivers, जो लोग होंगे, जो organizations होंगी, they will make that change. Not everybody will. So you need to choose your path and keep a future consumer in mind. De Beers के point of view, we're doing great amount of research on where the consumer is going. So things like provenance, things like customer, जैसे आप सब मानेंगे मेरी बात के जब हम कोविड से बाहर निकले हैं, हर कस्टमर को एक हम सबको एक फीलिंग रहती है कि भाई what is the impact that we're making on Mother Earth. दिल्ली में हमने करीब कई सालों बाद एक blue sky देखा था. Lot of things have changed in the way we've gotten more conscious of the world. In the luxury business, consumers are more and more clear and want to know कि हमारा जो product है कहाँ से आ रहा है. So एक provenance in diamonds is going to become a very important norm. So that इस तरह से कुछ और trends हैं, transparency led, design led. अगर हम इनको अच्छी तरह से capture करें, then in this 10-year journey, everybody has to play a role. जैसे अभी मेरे co-panelist ने mention किया था, and the role of De Beers will be to provide certain ways by which consumer की जो need है, जो demand रहेगी, जो एक trend रहेगा, वो हम capitalize करें. There will be a very important role for bodies like World Diamond. On the global level, there will be a very important role on logistics. But I think the crucial role will be the role of the retailers, because we will have to change. And अगर मैं एक आपके platform के जरिए एक चीज बोल सकूं, I will say that we say change is the only constant. So we need to change. We need to change and be ready for the new age consumer. And the opportunity, my friends, is incredible, because ये हमारा समय है. Or for us to get to this level of enhancing the demand of diamond, consumer be ready hai. Companies like us want to invest in the market. We will be investing. There's a great amount of work happening, and more focus is coming to India. Key is, aap log ready hain, and are we ready to make this change and really capitalize on what India's capable. Thank you, Sachin bhai. And my last question to the entire panelists would be like, how do you see the jewelry demand growing and emerging towards the market capitalism nearing the Vision 2025? How are we preparing ourselves for Vision 2025? Starting from Vinod bhai. That is a very loaded question, and it has so many parameters, out of which we only control few. So, as the affluence level will grow in India, there will be more opportunities for jewelers to sell. The market will definitely grow. 30 years back, there was a survey in Britain, and jewelry was rated number 1. The theoretical question was, if they were given a woman was given £1,000, where would she spend it? And jewelry was number 1. 10 years back, that survey was repeated, and guess what number jewelry was? 6th. So today, with the disposable income going or coming from younger generation, they want more experiential products.
we will have to up our game as jewelers, change the way we are marketing goods, embrace the newer technologies, newer messaging systems, because kids today don't use Facebook. They don't use Instagram often. They are on Snapchat. And 5 years later, instead of Snapchat, there is going to be something else. So we are so far behind the learning curve as a jewelry community that we need to up our game and embrace the latest technologies which are there, which will need a lot of capital expenditure on our part, getting new skills, getting new people who have those skills to man those systems and processes. Once we do that, I'm sure our businesses are going to grow by leaps and bounds. This is, what I feel. So, Edward, what are your ideas about the jewelry demand growing and emerging towards the market capitalism vision 2025? Thank you. I think there is a short term and a longer term. In the short term, we have to look at the present situation. Everything in the diamond industry is about consumer confidence. And consumer confidence is taking a step backwards in Europe because of the war in Eastern Europe. And in America, probably also, but we don't know yet. There are a lot of uncertainties. In the medium and long run, as we have heard, there is an increase in the well-being of people and the financial possibilities, both in India and in China. And there's no doubt that there will be a growth in the sales of natural diamonds. So on the longer run, we can be rather optimistic. Now, it is not up to me to do predictions about prices. We can only look objectively at the supply and demand curves. The supply at the moment is upset by the things that are happening, and we have to watch carefully. The only advice I can give is not to speculate in either direction and just wait and see how things are going. So long run, very positive. For this year, I have a very careful approach based on the political situation. But everything we do is concerning consumer confidence. And not only the World Diamond Council, I think every organization here around the table is concentrating on that, because that is the basis of natural diamonds. And natural diamonds also represent such an emotional value because of the way people give it and the symbolism of diamonds, that it is all around that subject. So that's how I see the situation at the moment. Thank you so much, Edward, for showing the light on that. Sachin bhai, De Beers has got into each and every field, from mining, from jewelry making, from forever marking the diamonds, and a hell lot of things. So also they have emerged in the CVD diamond field also with their brand. So what are your views of capturing and capitalizing the market 2025? Your point of view, say India is going to be the growth driver. I strongly believe in it, and we see that happen year on year in the local market with the partners. Just say Calcutta, I deeply respect with what happens in diamonds, and I think if there are few things that we need to actively do, would be, I will certainly sort of align with what Vinod was mentioning, Abhi, in terms of, are we ready to, or are we making the changes to be ready to talk to the consumer in the ways the consumer is willing to talk, and hence make those important changes. I think that all of us as leaders in the organization need to employ younger people in the way they think, because decision making and the ways that we move forward is going to be very, very different the way they look at us, and make those changes. I mean,
technology is moving at such a rapid pace. It's just incredible. So, there are whole conversations about this meta world and meta phase where everything will be digital and diamonds will sell digitally. I mean, who knows what's going to happen there? And today, अगर कोई आके हमारे को उसके ऊपर बताए presentation दे, I think we all will be perhaps taking a back seat. But I would say that we should, we as an industry, need to be open, try experiments, and be current to the consumption and the communication that today's customer is ready to pay. And I think that's pretty fundamental. But I think we are very positive at Awares from the Indian market perspective. And I think by 2025, we should be in double digits of consumption of diamonds at a global level. Thank you so much, Sachin Bhai. And Vaishali ji, price point of view, you have thrown the light on the trust point. How do you find if, the growth of platinum by 2025? What do you feel? Sorry, I was on mute. So I will completely agree with Sachin, who was just talking about how India is well placed as a country to be a demand driver, because for PGI globally as well, if we see the next few years, 2025 and beyond, India is really going to be the growth driver for platinum jewelry consumption. And for a couple of reasons for that, because if you look at it, we've got this very young demographic. It is a demographic capital. We've got a very strong industry. And as Vinod, I was saying, if we embrace change and we are relevant to the consumer, I think that is very important. And for us at PGI, it starts. We put our consumer front and center, so we have to stay relevant to our consumer. Whether it is, that's why, in terms of assurance, quality, transparency, design, whatever it takes, how we speak, where we speak, all of that, and how we connect to the consumer becomes really, really important. Technology is playing a huge role, whether it is in providing assurance or it is going to be in designing or manufacturing or selling, buying, in every which way. So therefore, I think staying relevant, and if we can do that, that is going to be our key focus, is to stay relevant to the young consumer, because we have, as I said, spent 20 years talking to this consumer, and that is the heartbeat of platinum. And we have partners who have actually built this market along with us, and and as an industry, if we take this on to stay relevant and stay in terms of in certain moments ahead of the consumer, we mustn't let the consumer lead us. We should be able to lead the consumer and keep jewelry in the top 3 in their share of mind and share of wallet. So I think then we are looking at a good run. But overall, we are very bullish on India, we're very bullish on demand. And 2025 is going to be a milestone for us as well. And we should definitely look at doubling the fabrication of this country in terms of platinum jewelry. Thank you, Vaishali ji, and would really thank the entire panel out here. Edward, thank you, Sachin bhai, Vaishali ji, Rajesh bhai, and Vinod bhaiya. So thank you so much for joining today. Thanks. Thank you so much for coming to an end of the session. May I request our Chairman of Expert Committee, Jewellery and Lifestyle, Mr. Vinod Bamulwa, to please give away mementos to our speakers for this panel. To Mr. Shripal Dholakia, Director Srikanj AI Limited. Thank you so much for attending this session. To Mr. Rajesh Neelkantha, Executive Director and CEO, BBC Logistics. Thank you so much, Mr. Neelkantha, to be here in Calcutta and attending this session. A group photo. I would also like to thank the virtual speakers for this session for making time to address Mr. Edward Usher, Executive Director, World Diamond Council,
Ms. Vaishali Banerjee, Managing Director, India PGI, and Mr. Sachin Jain, Managing Director, De Beers, India. Thank you so much for being here. I would like to call upon stage the next panelists. The next session would be on gold monetization and hallmarking standards. For that, may I call upon Mr. Harshad Ajmera, founder, JJ Gold House, to please come up on the dais. May I call upon Mr. Uday Shinde, President, Indian Association for Hallmarking Center, to please come up on the dais. I would also have our virtual speakers address this session. Our virtual speakers for this session is Mr. Anil Kansera, Technical Advisor, Yash Oro India Private Limited, Mr. James Jose, Managing Director, CGR Metalloys and Past Secretary, AGRM, Association of Gold Refineries and Mines, Mr. Pavan Kumar Kandoi, Deputy Director General, Eastern Regional Office, Bureau of Indian Standards, BIS. The session would, and of course, Mr. Kanchan Jana, Regional Manager, Fisher. The session would continue, and may I request all of you to be there, a part of this interesting session, post which we will open lunch for everyone. Thank you so much. जय जिनेंद्र, नमस्कार। सबसे पहले मैं पैनल में उदय भाई सिंधे जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ हॉलमार्किंग सेंटर का स्वागत करता हूं। हमारे साथ में इधर में कंचन जाना जी है, फिशर कंपनी के, जो अपने साथ में जुड़े हुए हैं, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। वर्चुअल के अंदर में श्री अनिल भाई कंसारा जी, टेक्निकल एडवाइज़र ऑफ द यश ओरा कंपनी के, उसका भी मैं स्वागत करता हूं। जेम्स जोस, सीजीआर के एमडी है, प्लस पास्ट सेक्रेटरी ऑफ एजीआरएम, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। और अपने साथ में मिस्टर पवन कुमार, बीआईएस के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ईस्टर्न इंडिया के, जुड़े हुए हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ में जुड़े हैं, उसके लिए आपका खूब खूब आभारी हूं। और सेशन का स्टार्टिंग के लिए अपना हॉलमार्क और जीएमएस स्कीम के ऊपर में ये सेशन है, और कुछ बुलियन और रिफाइनरी का भी कुछ डिस्कस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो मैं सबसे पहले थोड़ा सा छोटा सा ब्रीफ एक तो हॉलमार्किंग के ऊपर मैं देना चाहता हूं कि थोड़ी सी जानकारी सबको मिल सके। आज की तारीख में इंडिया के अंदर में 1058 हॉलमार्किंग सेंटर है, 196 सेंटर पाइपलाइन में है, 256 डिस्ट्रिक्ट में हॉलमार्क कंपलसरी है, और हॉलमार्क महीने के अंदर में 1 करोड़ पीस हॉलमार्क हो रहा है, जिसके अंदर में 22 कैरेट का लगभग 81% हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली फिगर है, हो सकता है मेरा भी कुछ गलती भी हो सके। 75 टन का 750 का लगभग 15% हॉलमार्क हो रहा है। 14 कैरेट का लगभग 2% से कम हॉलमार्क हो रहा है।
8350 का भी 2% से कम है और 23 कैरेट का 1% से कम हॉलमार्क हो रहा है। और वजन का भी थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं कि 2 ग्राम से नीचे में 30% ज्वेलरी हॉलमार्क होती है, 2 से 5 ग्राम में करीब करीब 33% ज्वेलरी हॉलमार्क होती है, 5 से 10 ग्राम के अंदर में 16% ज्वेलरी हॉलमार्क होती है। तो ये अप टू 10 ग्राम तक 78% ज्वेलरी अप टू 10 ग्राम तक की है और 20 से 50 ग्राम में करीब 7% ज्वेलरी हॉलमार्क होती है, 10 से 20 ग्राम में 14% और 20 से 50 ग्राम में करीब 7% ज्वेलरी हॉलमार्क होती है और 50 ग्राम से ऊपर में लेस देन 1% है। तो ये क्या एक ठो आपको रफली जानकारी मिली। 256 डिस्ट्रिक्ट के अंदर में 87% 50 डिस्ट्रिक्ट में ही हॉलमार्क हो रहा है और 75% हॉलमार्क ज्वेलरी 215 हॉलमार्किंग सेंटर में हो रही है और बाकी का 75% ज्वेलरी बाकी के 850 सेंटर मिल के कर रहे हैं। वो 850 सेंटर का महीने का 25 लाख ज्वेलरी होने से डेली का 100 पीस हॉलमार्क ज्वेलरी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ देने के बाद में कुछ क्वेश्चन है जो मैं स्टार्टिंग में उदय भाई से पूछना चाहूंगा कि हॉलमार्किंग में HUID आने के बाद में क्वालिटी में कुछ फर्क पड़ा है? सबको मेरा नमस्कार। जो सवाल पूछा हर्षद भाई ने कि भाई HUID आने के बाद हॉलमार्किंग के क्वालिटी में कोई फर्क पड़ा है क्या, तो इसका एक बारगी में उत्तर देना चाहूँगा, हाँ ज़रूर पड़ा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि HUID आने से पहले कोई सही काम नहीं हो रहा था। HUID पहले आने से पहले भी जो हॉलमार्किंग सेंटर हमारे काम कर रहे थे, अच्छा ही काम कर रहे थे और सही ही काम कर रहे थे। परेशानी थी कि पुराने हॉलमार्किंग के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं था, उसको पहचाना नहीं जा सकता था क्योंकि बाजार में बहुत सारी फेक मार्किंग की मशीनें लगी हुई थी जो BIS के लोगों का दुरुपयोग करके उसके ऊपर गलत ज्वेलरी के ऊपर मार्किंग को कर रहे थे और मार्किंग होने के बाद पता लगाना बहुत ही मुश्किल था कि ये ज्वेलरी कहाँ मार्किंग की गई, कब की गई, किसने की गई। लेकिन आज HUID आने के बाद हमारा आम कस्टमर भी आसानी से जान सकता है कि ये ज्वेलरी कहाँ हॉलमार्किंग की गई, कब की गई, किस ज्वेलर्स ने करवाई। साथ ही जो HUID में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा जो भी काम, हमारा जो भी डाटा, हमारे काम से जो भी डाटा जनरेट होता है वो सारा BIS के पोर्टल के ऊपर होता है। तो गवर्नमेंट की भी BIS की भी हमारे डाटा पर 24 घंटों नज़र रहती है, 24 घंटे उनकी पहुंच रहती है। हमारे डाटा जनरेशन में थोड़ी सी भी गलती मिलने पर उनके तरफ से तुरंत इस बात की जांच की जाती है जिससे कि हमारे कोई सेंटर गलत ना कर सके। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भाई HUID आने के बाद क्वालिटी में फर्क पड़ा है, सुधार हुआ है। थैंक यू। जेम्स भाई जी, HUID आने के बाद में कस्टमर को भी क्या फायदा हुआ है? Definitely, the customers are getting the facility for verifying the details of the hallmark. If you can go to the BIS app and get all the 5 details like which jeweler has hallmarked it, what is the caratage, which hallmarking it has been done, and what is the date of hallmarking, what is the purity. So all these details are now available for the consumer from the BIS app. That gives a lot of confidence in jewelry purchases. Thank you. Okay, thank you. अनिल भाई, HUID आने के बाद में जो 850 सेंटर में 25 लाख पीस मंथली जो कर रहे हैं, मतलब पर दिन का एक दिन का 100 पीस एवरेज आ रहा है,
वो 100 पीस में मतलब उसका कलेक्शन मात्र 3,500 रुपया हो रहा है। अभी नया रेट आने के बाद में 4,500 रुपया पर डे का कलेक्शन होगा। तो ये हॉलमार्किंग सेंटर को चला पाना पॉसिबल है क्या? Namaste Harsharpi and other panel members and ICC for inviting me for this webinar. हर्षद का जो प्रश्न है, ऐसे देखिए तो 100 पीस का मतलब 25 दिन में अगर काम भी करता है तो 100 पीस में टोटल जो इनकम होती है, एक हॉलमार्किंग सेंटर लगाने के लिए मोटा मोटा सा करीब 1 करोड़ रुपए का खर्चा है। अगर वो खर्चे को लेख के देखें तो हॉलमार्किंग सेंटर के लिए शायद ये जो वॉल्यूम है बिल्कुल सस्टेनेबल नहीं है। हॉलमार्किंग सेंटर शायद जिसने चालू किया है वो कुछ ना कुछ आशा में बैठा होगा कि गवर्नमेंट को भी रेट बढ़ाएगी तो हम लोग कायदे से कर पाएंगे, थोड़ा ज़्यादा हॉलमार्किंग करेंगे, स्टाफ को भी सेटिस्फाई करना है और उसका खर्चा भी करना और सही ढंग से काम भी करना है। ये सब मिला के अगर देखो तो हॉलमार्किंग हमारी जो डिमांड पहले गवर्नमेंट में हमने साथ में एसोसिएशन की ओर से रखी थी, मिस्टर जैम से मिस्टर अपने उदय सिंधे साहब है और मेरा ये सबने मिल के गवर्नमेंट को एक प्रेजेंटेशन दिया था कि हमारी ब्रेकअप इतनी है हॉलमार्किंग सेंटर की। जो चीज हम लोग पहले जब हॉलमार्किंग 2000 में चालू किया था तो ये 18 रुपया था खाली रेट, उस पर भी हमको 1.10% तो रॉयल्टी जाती जाती है। आज की तारीख में भी ये रेट जो 35 का भी एक महीने से 1 अप्रैल से जो बढ़ा गया, 1 मार्च से बढ़ा कर 45 रुपया कर दिया, इसमें भी 4.5 रुपया तो गवर्नमेंट को ही जाना है। इसके अलावा ये HUID जब से इम्प्लीमेंट हुई तब से ऑलमोस्ट ऑल सेंटर्स हैव अपग्रेडेड द टेक्निकल फैसिलिटीज। काफ़ी खर्चा अंदर लग गया है, काफ़ी कॉम्पिटेंट स्टाफ लाना पड़ा है, तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट जो हॉलमार्किंग की है काफ़ी सुटअप हो गई है। तो हमारी रिक्वेस्ट तो गवर्नमेंट से यही थी कि भाई हमको कम से कम 75 या 100 रुपया दिया जाए, सो दैट हॉलमार्किंग अपने जो स्टाफ मेंबर है या तो हॉलमार्किंग जो कॉमर्शियल वायबिलिटी है वो सर्वाइव भी हो, साथ में ज्वेलर्स लोग को हम लोग सही ढंग का काम करके उनकी जो भी नीड्स हो सेटिस्फाई करें। तो मेरे ख्याल से इवन टुडेज 45 रुपीज पर पीस इज ऑल्सो इनसफिशिएंट, और बाकी जो भी सेंटर जो नहीं चल रहे हैं जिनको 100 पीस पे काम रहे तो कम से कम उनको थोड़ा रेट बढ़ाने के बाद एटलीस्ट दे विल बी एटलीस्ट ऑन द सर्वाइविंग मोड। नहीं तो ये हो जाएगा कि आज की तारीख में जो रेट दिया गया है गवर्नमेंट ने, जो टाइम दिया गया है, जो तरीके से हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, तो शायद ये बाकी के जो सेंटर है जिनके पास काम नहीं है वो शायद इसमें से हो सकता है काफ़ी सेंटर शायद बंद भी हो जाए और वापस एक इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा मार्केट में। पहले ज्वेलर ने डिमांड किया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इसलिए हम लोग ज़्यादा ज्वेलरी नहीं कर पा रहे, इसलिए आप हॉलमार्किंग मैंडेटरी मत करो। जब देश में इतने सारे हॉलमार्किंग पड़े हो उसमें से 80% ओनली सेंटर्स काम के बिना बैठे हुए, तो शायद ये थोड़ा एसोसिएशन की ओर से हमें गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट है, थोड़े ज्वेलर्स लोग को भी हम लोग समझाते हैं कि अल्टीमेटली जो भी रेट बढ़ेगा वो कस्टमर के पास ही जाने वाला है, आप उनसे भी कलेक्ट करने वाले हैं एज पर द रूल। तो शायद आज एक ज्वेलरी 10 ग्राम की ज्वेलरी की कीमत जो 50,000 रुपया उसके ऊपर मार्कअप है 10-12 टका या 60,000 की ज्वेलरी, उसमें 100 रुपये की कीमत का फ्रैक्शन कितना होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्वेलर्स जो अपने जो हमारे साथ में जुड़े हुए हॉलमार्किंग स्कीम में, एक्चुअली हम लोग साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं एंड वी वांट टू कलेक्टिवली टेल टू द गवर्नमेंट टू इंक्रीज रेट्स टू एटलीस्ट 25 to 100 rupees. So that's my submission. Okay, thank you अनिल भाई। अभी मैं उदय भाई से आपको पूछ रहा हूँ कि HUID हॉलमार्किंग करने में आप कितना टाइम लगाते हैं, ज्वेलर्स को कितने टाइम में ज्वेलरी उसको वापस मिल जाती है? अभी जो फिलहाल HUID आने के बाद हमें जो BIS के पोर्टल पे काम करना पड़ रहा है, तो ऑन एन एवरेज इट डिपेंड्स अपॉन लॉट साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यदि हम लोग एक 100 पीस का लॉट लेके चलेंगे तो उसको सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए यदि उसको हॉलमार्क HUID करना है तो कम से कम 8 घंटे का समय लगता ही लगता है। जो समय पहले 24 घंटे स्टार्ट में 36 घंटे भी लगता था, लेकिन अब वो घट के 8 घंटे आ गया है और 8 घंटे से नीचे आने का कोई संभावना नहीं है। यदि कोई इससे कम समय में ज्वेलरी दे पा रहा है HUID करके, इसका मतलब कहीं न कहीं वो बाईपास कर रहा है काम को, सही तरीके से काम को नहीं कर रहा है। और शायद कुछ ज्वेलर्स को भी अच्छा लगता है कि चलो इसने 4 घंटे में दे दी, 3 घंटे में दे दी, लेकिन हम सभी को इस बात को समझना पड़ेगा कि पहले का सिनारियो अलग था, अब का सिनारियो अलग है।
अभी हम लोग सब लोग, हमारी पूरी इंडस्ट्री, ज्वेलरी इंडस्ट्री हो, हॉलमार्किंग इंडस्ट्री हो, हम लोग एक एक्ट से बंधे हुए हैं और इस एक्ट में सजा का प्रावधान दोनों के लिए है। ये ज्वेलरी जो हॉलमार्क होती है, ऐसा भी कुछ लोगों का समझ है कि हॉलमार्किंग हो गया तो ज्वेलर्स का कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसका कोई ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बचता है। लेकिन एक्ट को हम लोग देखेंगे तो जितना जिम्मेदारी हॉलमार्किंग सेंटर की है उतनी ही ज्वेलर्स की है। इसलिए जरूरी है कि ये हॉलमार्किंग यदि कोई जल्द आपको करके दे रहा है, कम समय में करके दे रहा है, डिस्काउंट पे मतलब आपको कुछ घूस के रूप में आप उसको ज्यादा से ज्यादा काम दे, इसके लिए आपको कुछ डिस्काउंट दे रहा है, तो काइंडली ऐसे सेंटर से बिल्कुल काम नहीं करवाइए, क्योंकि कल को वो तो डूबेगा, आपको भी ले डूबेगा। क्योंकि कल को आपकी ज्वेलरी यदि टेस्टिंग में गलत पाई गई तो हो सकता है आपका भी लाइसेंस सस्पेंशन में चला जाए। इसीलिए ऐसे किसी भी सेंटर को आप लोग बिल्कुल सहयोग नहीं कीजिएगा। थैंक यू। धन्यवाद। मैं अभी BIS के पवन जी से एक सवाल पूछना चाहूँगा कि क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए BIS की तरफ से साल में एक रजिस्ट्रेशन ज्वेलर्स के पास से एक सैंपल प्रति मार्केट सैंपल के हिसाब से लेना चाहिए और उसको आउटसोर्स में, यदि BIS के पास में रेफरेंस लैब कम है तो आउटसोर्स मतलब कोई भी मिंट में, बॉम्बे मिंट है, कलकत्ता मिंट है, हैदराबाद मिंट है या NABL एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी में टेस्टिंग करा के उस रिजल्ट को मीडिया में आउट करना चाहिए कि नहीं। आपका क्या अभिप्राय है, जिससे हमारे हिसाब से इसमें क्वालिटी में बहुत सारा सुधार हो सकता है, तो आपका मैं अभिप्राय जानना चाहूँगा। आवाज नहीं आ रहा है सर आपका। सॉरी। यस आ रहा है अभी। सबसे पहले आपका धन्यवाद आप सभी का, और मैंने ये 4th जेम्स एंड ज्वेलरी समिट में आपने हमें इनवाइट किया, सो थैंक्स अ लॉट फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस गोल्ड एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री विजन 2025 इज वेरी पर्टिनेंट। और ये समिट बहुत अच्छे समय पे हो रही है। हम लोग एक नए मतलब मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं। 23 जून 2021 में जब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हॉलमार्किंग को मैंडेटरी की और अब तक समझ लीजिए तकरीबन 8 महीने का सफर, उसमें काफी चेंजेस आपने भी महसूस किया होगा, हमने भी काफी महसूस किया होगा। ये हॉलमार्किंग की HUID की जब शुरुआत हुई तो आपको याद होगा BIS ने इवन इन कलकत्ता ने मैंने कम से कम 150 से 200 VC की है। प्रोग्राम भी हमने ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया है, विभिन्न AAC के सेंटर्स के लोग आए हैं, उनको हमने ट्रेनिंग दी है। HUID पोर्टल के बारे में बहुत विस्तार से बताया गया है और हर नोक एंड कॉर्नर में, हर जगह ऑल ओवर इंडिया, आप तो अभी इसमें हर ऑल ऑफ इंडिया के आपके सेंटर के लोग शामिल हैं, उन्हें पता है कि वी हैव टेकन ए लॉन्ग स्टेप्स। ज्वेलर्स भाई के साथ भी बहुत मीटिंग की है, बहुत उनको समझाया है, और देयर लॉट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स फ्रॉम AC से भी हुआ है, ज्वेलर्स की तरफ से भी बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई है कि कोई भी देखिए, कोई भी नई चीज हम करते हैं कठिनाई आती है। कठिनाई क्यों नहीं आती है? आप समझ लीजिए जब Amazon फ्लिपकार्ट आया था तभी प्रॉब्लम थी ना, बट धीरे धीरे उसमें उसके बेनिफिट्स आप पहलू देखो तो छोटे दुकानदार, छोटे जो है वो Amazon में अपनी बेच सकते हैं, सामान बेच सकते हैं और कंज्यूमर को सामान मिल सकता है। सो देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स है नई टेक्नोलॉजी की। तो इसी तरह से ये HUID आने से सबसे पहले आप अभी अरशद भाई ने बताया कि 1 करोड़ 20 लाख पर महीने में होती है। पहले भी हॉलमार्किंग थी, इतने फिगर इतने ट्रांसपेरेंट नहीं थे। अभी तो ऑनलाइन आप एक क्लिक में देख सकते हैं कौन सा AAC सेंटर कितना बना रहा, आपस में भी आप देख सकते हो, BIS पोर्टल में भी जाके देख सकते हैं। तो दिस इज द ट्रांसपेरेंसी आने से आदमी को काम करने में भी मजा आता है। और जैसे कि देखिए कुछ लोग गलत काम करते होंगे और उनके ऊपर एक्शन होती होगी और फीडबैक आते हैं तो हम एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि
जनरली हर फील्ड में 80-90% लोग अच्छे ही होते हैं, तभी तो इस स्कीम चालू रहती है। हो सकता है कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं, तो इसी दौरान मैं बताना चाहूंगा 8-10 ऑलमोस्ट 8 सेंटर के हमने लाइसेंस कैंसिल किए हैं, करना पड़ा, न चाहते हुए भी करना पड़ा। तो अभी जैसे ये बता रहे हैं हर्षद भाई ने, ये बहुत अच्छा सुझाव है, ऑलरेडी हमने दिसंबर माह से इम्प्लीमेंट कर दिया है। हमने बहुत सारे आउटसोर्स आदमी रखे हैं, उनको टारगेट दिया है 75 ज्वेलरी आपको हर महीने लेनी है। और एक मतलब जैसे कलकत्ता में हमारे कम से कम 5-6 आदमी है, तो समझ लीजिए 200-250 महीने की आ रही है, और ये आगे बढ़ती जाएगी। और जैसे आपको पता है कि 1,30,000 ज्वेलर्स जो रजिस्ट्रेशन फ्री हो चुका है, ज्वेलर रजिस्ट्रेशन फ्री है, और उसमें बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। रही बात सवाल ये जो एईसी सेंटर की पैसे बढ़ाने की, ऑलरेडी ये प्रपोजल हमने भेजा हुआ है, और वो सरकार भी बेचाराधीन है, जरूर कुछ न कुछ सही तरीके का उसमें से निष्कर्ष निकलेगा, क्योंकि आपकी भी जो पड़ता जो लागत है वो मिलनी चाहिए। डेफिनेटली वी ऑल्सो लाइक दैट, क्योंकि यू आर द इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर। आपके बिना हम हॉलमार्किंग स्कीम सक्सेसफुल हो ही नहीं सकती। यू आर द मेन पिलर ऑफ द हॉलमार्किंग स्कीम। जब भी मैं यही बात कहता हूँ, मेरे पास बहुत मतलब मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं लास्ट 4-5 जो सेंटर के लाइसेंस कैंसिल करने पड़े, उनको यही बताता हूँ कि भाई आपने बिना टेस्ट किए हुए अगर हॉलमार्क कर दिया, तो आज एक कंज्यूमर एक ज्वेलर से खरीदता है तो क्या सोच के खरीदता है? वो मतलब 10 साल 15 साल 20 साल की पूंजी, कोई शादी ब्याह में 5 लाख 10 लाख। अब भारतवर्ष में तो हर तरह के लोग हैं, कोई हर तो अरबपति करोड़पति नहीं है, मध्यम वर्ग के लोग भी है, वो भी थोड़ा अपने बहन बेटियों को सोना देना चाहते हैं, तो उसकी तो कमाई पे पूरा पानी फिर गया ना जी। तो ये चीजें हम लोग कहते हैं, तो बहुत लोग जो अच्छे लोग हैं, जो वेरी प्रोफेशनल, दे डोंट डू दैट। किंतु कुछ लोग हैं बहकाव में आ जाते हैं, अरे ये है वो है, शॉर्ट टर्म गेम है। और जब हमारी सर्विलेंस देखिए, ऐसा है कि 24/7 सर्विलेंस इज नॉट पॉसिबल इन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये अपने ऊपर भी रखना है कि हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ने से गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। हम हमारी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं, और आप लोग भी कर रहे हैं। हम ये डिनाई नहीं कर रहे कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे। आप लोग का वो सहयोग हमको बराबर मिल रहा है, एंड फॉर दैट वी आर वेरी थैंकफुल। पर्टिकुलर इन कलकत्ता में जैसे उदय जी है, अजमेरा जी है, और भी कुछ सेंटर्स के लोग हैं, सो दे आर डूइंग वेरी वंडरफुल वर्क एंड वी अप्रिशिएट दैट। ओके, थैंक यू सर। और एक चीज जानकारी चाहिए कि कस्टमर को जब खरीदने जाते हैं तो कस्टमर HUID का डिमांड करता है, लेकिन बहुत सारे ज्वेलर्स के पास में पुराना स्टॉक होने से पुराना हॉलमार्क किया हुआ ज्वेलरी बिक्री कर रहे हैं। तो इसका कोई लास्ट डेट या कोई टारगेट डेट हो कि हाँ 3 महीना बाद या 6 महीना बाद या 1 महीना बाद वो कस्टमर को 100% ही HUID वाला ही माल मिले। और उसके लिए हमारी तरफ से हॉलमार्किंग एसोसिएशन की तरफ से हम लोग भी इसमें चेष्टा करेंगे कि पुराना हॉलमार्क किया हुआ है और HUID करना चाहते हैं तो उसमें कुछ डिस्काउंट दे के भी हम लोग उसको ऐसा कुछ प्रपोजल रख सकते हैं। 50% हम लोग डिस्काउंट दे के भी उसको HUID में कन्वर्ट उसको कर दिया जाए, ताकि कस्टमर को 100% एक डेट हो कि इस डेट के बाद में उसको 100% HUID वाला ही माल मिले। उसमें आपकी तरफ से सहयोग चाहते हैं। हाँ, मैं ये कहना, पहले तो कुछ था ना स्टॉक डिक्लेरेशन जो पुराना था, कुछ टाइम दिया गया था। अभी हम लोग ऑफिसर्स जो भी जा रहे हैं, सैंपल ले रहे हैं, उनको बता रहे हैं। अदरवाइज वो हम करेंगे जो भी कार्रवाई पॉसिबल है। अगर सही तरीके से समझाने से नहीं होगा तो सम यू हैव टू अप्लाई सम लीगल कोर्स। बट एक चीज मैं कह दूं कि कंज्यूमर बहुत बहुत जानकार हो चुका है। इवन मैं लास्ट टाइम नॉर्थ ईस्ट में गया था, एक नूक एंड कॉर्नर में गया था, वहां पे प्रोग्राम हुआ था,
इट्स वेरी 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 विलेज टाइप का एरिया, वहां पे भी कंज्यूमर वो देखा मैंने ज्वेलर के पास, बोला हमको तो HUID वाला ही माल चाहिए। जी जी आज नहीं तो एक महीना, अब वो बोला अभी है नहीं, तो बोला कितना दिन बाद आएगा, बोला टाइम पता नहीं, बोला आप होगा हम वेट करेंगे 7 डेज 10 डेज पर हमको HUID वाला ही चाहिए। तो इस तरह की जागरूकता आ रही है लोगों में, ऐसी बात नहीं है कि देखिए मार्केट में रहना है तो कस्टमर को आपको सेटिस्फाई करना है, कस्टमर इज द किंग, इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट। सर मैं जागरूकता लाने के लिए पुराना वाला जो है अभी, हो सकता है थोड़ा 2-4 महीना और चलेगा, उसके बाद तो ये खत्म होने वाला है, इज नॉट गोइंग टू गो फॉर फॉरएवर। सर जी जागरूकता लाने के लिए BIS की तरफ से एडवर्टाइजमेंट HUID की बेसी होनी चाहिए। यदि आप रॉयल्टी में जितनी इनकम करते हैं उसका 10% पोर्शन, हमने अभी लास्ट आप देखे नहीं पेपर्स में, वी हैव गिवन ना, अभी थोड़ा दिन पहले दिए थे। रेगुलर हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, रेगुलर हम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम में भी कमी नहीं है। जो हमने एम्फेसिस हॉलमार्किंग स्कीम पे दी है, सबसे ज्यादा एम्फेसिस हमने दी है हॉलमार्किंग स्कीम में, यू कैन नॉट डिनाई दैट। बट हाँ और करेंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे, रुकेंगे नहीं, थकेंगे नहीं, आगे बढ़ते जाएंगे, साथ कंधे पे कंधे मिला के अपन चलेंगे। सो सब चीजें जो छोटी मोटी ये दिक्कतें हैं, शुरुआत में देखिए पोर्टल में दिक्कत आ रही थी, धीरे धीरे स्टेबलाइज हो रहा है, अभी और धीरे धीरे हम कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें आसान हो जाएगी। अब आपका GST पोर्टल में भी पहले कितनी दिक्कत थी, अभी जाके स्टेबलाइज हुआ है, तो उसी तरह से ये हमारा मानक ऑनलाइन भी पहले की तुलनात्मक रूप से अभी बहुत अच्छा हो रहा है। बट वी आर नॉट हैप्पी, वी विल बी इंक्रीजिंग दिस फार मोर। और ये आप जो बोल रहे 1 करोड़ 20 लाख, हो सकता है कि आफ्टर फ्यू इयर्स जो आपकी विजन देख 2025 में बी 5 करोड़ पर मंथ भी आ सकता है फिगर, हु नोज। जी जी it will come because it is मतलब galloping ना, ये जो चीजें हैं once it is और ये जो geographical जो imbalance in distribution of है ना, because you cannot change the habit, like northeast में these are tribal area, there you will not find much of hallmarking, usage of hallmarking jewelry, or even jewelry they don't use much of jewelry, but south west ईस्ट में कलकत्ता बिहार इस एरिया में आपको ज्यादा मिलेगी। ओके मैं अभी सिंधे जी को एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आज की तारीख में जो BIS का पोर्टल लगाया है और ऑनलाइन सिस्टम में काम हो रहा है, तो मेरे को बिना SRF किए, बिना फायर ऐसे किए, फेक डाटा इनपुट डाल के 2 घंटा में HUID जनरेट हो सकता है? नहीं देखिए एक मिनट मैं बोलना चाहता हूँ इसमें, ये जो चीजें आ रही है दैट अभी हमने हमें एक ऑफिसर गया हॉलमार्किंग सेंटर में, उन्हें बताया CCTV रिकॉर्ड देखे महीने भर का, तो उसमें देख रहा है कि उसका वो XRF तो चल रहा है, फायर ऐसे नहीं है, और जब डिलीवरी वाउचर में उसने वो मार रखा हॉलमार्किंग, फिर उसने रीडिंग भी मारी है, रीडिंग भी मैनिपुलेट की है, फिर वो कोऑर्डिनेट दिखाया, बट कोऑर्डिनेट में मार खा गया। वो इतना तो आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते ना कि कोऑर्डिनेट का वेट और उसका वेट बराबर होगा, वो कोऑर्डिनेट भी दिखाया, बोला तो हमने बोला कि वेट करो भाई, वेट में कहीं नहीं मैच कर रहा है। तो दीज आर द थिंग्स। आप तो ऑडिट करने तो बहुत कम सेंटर में जा सकेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि जैसे आप लोग ने बहुत सारे सेंटर को ऑटो सिस्टम में भी डाला हुआ है, जैसे फिजर कंपनी का SRF है, उसके साथ में उसका इनपुट इंटीग्रेशन भी आपने चालू कर दिया है, तो बहुत सारे हॉलमार्किंग सेंटर में इंटीग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं और बहुत सारे सेंटर विदाउट इंटीग्रेशन के साथ में काम कर रहे हैं। तो ये हमारी तरफ से जितना जल्दी हो सके तो क्या है कि सबकी सिस्टम एक समान हो जाएगी। और कोशिश जारी है, हम लोग कन्विंस कर रहे हैं सबको, थोड़ी सी नई चीजें है, दिक्कत आ रही है किसी को, वो आई थिंक अल्टीमेटली एवरीबॉडी हैज टू इंटीग्रेट इट। यहाँ पे हमारे पास साथ में फिजर वाले बैठे हुए हैं, फिजर कंपनी के SRF कंपनी वाले,
मैं उनको भी एक सवाल पूछना चाहूँ कि आपकी कंपनी का तो इंडिया भर में 1000 मशीन लगा हुआ है, तो आपकी कंपनी किस तरह का सहयोग देती है कि इंटीग्रेशन आप लोग सबका जो हॉलमार्किंग सेंटर का डिमांड है वो कर देते हैं ना, उसके लिए बहुत बड़ी रकम मांगते हैं? गुड आफ्टरनून एवरीवन। नहीं, रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर, जो HOID के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरत होता है फॉर द XRF, तो हम लोग ये फ्री ऑफ चार्ज कर देते हैं फॉर ऑल द कस्टमर्स। इनफैक्ट जितना एग्जिस्टिंग कस्टमर्स थे, आई थिंक हम लोग सबको कर दिए हैं। नया कस्टमर्स जो अभी इंस्टॉलेशन हो रहा है या दे आर गोइंग फॉर अ न्यू हॉलमार्किंग सेंटर्स, उनका भी काम प्रोसेस पे है। तो और ये हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट पे ही करते हैं, हम लोग कभी कुछ चार्जेस नहीं लिए हैं। वी नेवर चार्ज फॉर एनीथिंग। थैंक यू। और पवन कुमार जी, एक चीज़ और आपको पूछना है, माइंड मत करिएगा, कि हमने सुना है कि मार्केट सैंपल जो आप पिकअप करते हैं उसके बाद में भी वो चेंजेस होने का चांसेस रहता है, ऐसा हमने सुना है कि उसमें भी चेंजेस हो जाता है। तो उसमें थोड़ा सा कोई नया सिस्टम आया है, ऐसा सुना है हमने कि कुछ आप लोग भी उसमें ट्राई कर रहे हैं कि फुल प्रूफ सिस्टम से वो लैब तक पहुंच सके। आवाज नहीं आ रहा। हेलो हेलो। हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं सर, आवाज फिर बंद हो गया आवाज। सर आवाज नहीं आ रही सर। Am I audible? Yes. Am I audible? जी। I don't think there is a height of, हो सकता, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है, if you feel like that there is some manipulation in market sample, you can give me a feedback, I will take the action. Generally there is no such, अभी तक तो हमारे पास कुछ ऐसा आया नहीं जी। अगर कुछ ऐसा कुछ अच्छा। नंबर 2, एक चीज जो आपकी जो इंटीग्रेशन हमारी SOP बनाई गई थी, हॉलमार्किंग एसोसिएशन कहीं पे वो SOP के खिलाफ ही कोर्ट केस कर दिया, तब क्या करें? उसमें तो थे इंटीग्रेशन, आपके एसोसिएशन ने कोर्ट केस करके उसमें स्टे ले लिया, तब हम क्या एक्शन लें बताइए? नहीं, आपकी बात भी सही है, लेकिन मैं उदय भाई को इसके बारे में बताना चाहूंगा कि आप जरा बताइए क्या सब को अपने एसोसिएशन मेंबर को जागरूक करना थोड़ी सी आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। जो एसोसिएशन के पदाधिकारी है, हम लोग तो करेंगे, बट आपकी बात शायद ज्यादा सुनेंगे, क्योंकि वो सरकारी आदमी होगा तो उनके अंदर डर सा रहेगा कि भाई ये क्या बता रहा है, सही बता रहा है कि गलत बता रहा है, हमको क्या। बट व्हेन यू पीपल सिट टुगेदर, सर हमारी बात भी सुनेगा, लेकिन पेट भरेगा तब वो हमारी बात सुनेगा। जब तक खाली पेट में कोई भी बात हमारी नहीं सुन पाएगा। मैं उदय भाई को उसका तो देखिए, हमने प्रपोजल चल रहा है, कोशिश हम लोग तरफ से है, सरकार के विचाराधीन है, वो जो इनका हॉलमार्किंग चार्जेस सर 45 किया ना आपका, 10 रुपया बढ़ा है। सर एसओपी के जैसे आपने बताया कि कोर्ट में हम लोग चले गए, स्टे ले लिया है, उसमें जो एक पार्ट है आपने इंटीग्रेशन का कहा, उसके लिए हमारा कभी भी विरोध नहीं रहा। और आज के समय में लगभग हमारे 80% सेंटर्स ने अपना इंटीग्रेशन का काम पूरा कर लिया है। ये आपके पास रिकॉर्ड में होगा। जो बचे हुए 20% है, उनका दिक्कत ये है कि उनके जो सप्लायर्स हैं वो उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब सहयोग नहीं कर रहे हैं मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी पुरानी मशीन बेच के दूसरी नई मशीन लेनी पड़ेगी, तब जाके इंटीग्रेशन होगा। ऐसे ही लोग बोल रहे हैं, यही तो हम बोल रहे हैं। हम और क्या बोल रहे हैं? अब बताइए कि ये एक तो पिछले 5 सालों से रेट हमारा 35 रुपए से पड़ा था, तो जो अभी जाके दया करके हमारे ऊपर 10 रुपया बढ़ाया गया। साथ में HOID आने के बाद हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन आया, हमें मैन पावर बढ़ानी पड़ी, हमें मशीनरी लगानी पड़ी, हमें जगह बढ़ानी पड़ी, मतलब हमारे खर्च और बढ़ गए। उस पर से हमें इंटीग्रेशन के लिए मशीनरी चेंज करनी पड़ेगी सर, तो हम कहाँ के रहेंगे ना। आप उसके लिए हम लोगों ने DG साहब से कहा था कि भाई हमें कुछ सब्सिडी की व्यवस्था की जाए, जिससे कि भाई जिसको मशीनरी चेंज करनी पड़ रही है तो उसको हो। उसके बारे में भी हमें BIS की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। और हमारा SOP में सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं सर, बहुत सारे पार्ट हैं। फायर का लाइसेंस लेने कहा गया है। अब फायर का लाइसेंस कलकत्ता जैसे शहर में लेने हम जाएं तो यहाँ पर सबसे पहले बिल्डिंग प्लान मांगा जाता है, और बिल्डिंग हमारी 200 साल पुरानी है। कहाँ से मिलेगा हमें फायर का लाइसेंस?
नहीं, जून तक अंडरटेकिंग लेके हम लोग कर रहे हैं ना। हाँ, तो इंटीग्रेशन हम लोग कर ही रहे हैं लेके देखिए, अब अभी आप बोल दोगे कि फायर कहाँ तक करेंगे। मान लीजिए कभी अनहोनी कुछ हो गई ना, मैं नहीं चाहता कि हो, कहीं पे हो जाए तो फिर क्या होगा, बीआईएस ने उसको बिना फायर के लाइसेंस दे दिया, फिर दोनों तरफ से बीआईएस को ही मरना है। सर ये हमारा लाइसेंस क्यों दिया, लाइसेंस क्यों नहीं दिया? सर हमारा अपनी लैब कितनी छोटी है आपको अच्छी तरह पता है सर। हमारी छोटी सी लैब है, स्कूल लैब से छोटी है, और पिछले ये हॉलमार्किंग 2002 से मतलब आज 20 साल हो गए हैं और एक सिंगल इंसिडेंट नहीं हुआ है फायर का हमारी इंडस्ट्री में, सिंगल इंसिडेंट। और ऐसा कुछ है भी नहीं कि आग लग जाए सर, लेकिन अब ये कहां से आ गया फायर का हमें ही पता नहीं सर। हमारे हिसाब से एक बार एसोसिएशन के साथ में एसओपी के ऊपर में एक मीटिंग करनी चाहिए और इसमें डिस्कस करके जो चीज अप्लाई कर सकते हैं उसको इमीडिएटली अप्लाई करवाना चाहिए और बाकी के ऊपर में एक बार सलाह मशवरा करके आगे बढ़ना चाहिए। और दूसरा चीज, एक चीज और सर जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबकी हॉलमार्किंग सेंटर में काम बढ़े उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक्सपोर्ट जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट हो रही है उसके ऊपर में यदि जिनेवा के साथ में यदि अपना एग्रीमेंट होता है, क्योंकि आगे में 7-8 साल पहले में ट्राई किया गया था, तब वहाँ से 4 मीटिंगें भरी गई थी, 4 या 5 मीटिंगें। उसके बाद में वो लोग की 2 डिमांड थी, बीआईएस एक्ट होना चाहिए प्लस दूसरा था उसका एनेबल एक्रेडिटेशन लेबोरेटरी होनी चाहिए। तो आज की तारीख में दोनों चीज़ संभव है, तो इसमें अपने जल्द से जल्द एक्सपोर्ट में ज्वेलरी वॉलंटरी एक्सपोर्ट जिसको हॉलमार्क करना चाहे वो कर सके, उसके लिए जिनेवा के साथ में एग्रीमेंट में अपने को आगे बढ़ना चाहिए, ऐसे हमारी सलाह सूचना है, विनती है। तो उसमें आप ये बहुत अच्छा सुझाव है अजमेरा जी का, डेफिनेटली, बिकॉज अभी तो जैसे एक्सपोर्ट वाला चक्कर क्या था, कोविड का चक्कर में अब धीरे धीरे सब चीज चालू हो रही है, तो डेफिनेटली ये जो फीडबैक मिला है विल फॉरवर्ड टू आवर हेडक्वार्टर एंड होपफुली समथिंग पॉजिटिव विल डेफिनेटली विल कम आउट। ओके, थैंक यू। और जेम्स भाई, मैं एक टाइम की कमी की वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट 1-2 क्वेश्चन है मैं लेना चाहूँगा। जेम्स भाई भी एक चीज़ बताइए, आरबीआई ने 25 अक्टूबर को एक तो एडवाइस जारी किया गया था जिसके अंदर में जीएमएस के अंदर में ज्वेलर्स और रिफाइनर को जीएमएस का कलेक्शन एजेंट बनाया गया था, जिसके अंदर में 1.5% का कमीशन बैंक की तरफ से ज्वेलर्स को या रिफाइनर को मिलने वाला था। तो उसका क्या स्टेटस है, थोड़ी उसके ऊपर प्रकाश डालिए। आवाज नहीं आ रहा साहब, मैं आपसे थोड़ा क्षमा मांगता हूं, कैन आई लीव द मीटिंग? जी जी, धन्यवाद आपका, खूब खूब धन्यवाद सर, थैंक यू। अजमेरा साहब, उदय शिंदे साहब, बाकी जेम्स साहब, सबका अनिल जी, आई थैंक ऑल ऑफ यू इनवाइटिंग मी दिस। ओके सर, ओके, थैंक यू, थैंक यू। जेम्स भाई थोड़ा इसका जल्दी थोड़ा जवाब दीजिएगा आरबीआई का जो जीएमएस के ऊपर में। The modified guidelines published by RBI in October is really beneficial for the jewelry trade because we are getting around 1.5% commission from the banks for processing the jewelry, for mobilizing older gold and converting it into bullion deposits. But लेकिन ये problem ऐसा है कि to operationalize the GMS, we need to have a GMS portal. हिंदी में बोल सके तो अच्छा रहेगा, प्लीज। Pardon? हिंदी में। Okay. So हमारे लिए कि GMS portal चाहिए। ये बिना GMS portal we cannot operate the deposit and mobilization. इसके लिए रिजर्व बैंक ने IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जिम्मेदारी दिया ये पोर्टल डेवलप के लिए। अभी 5-6 महीने के ऊपर है, अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं है। इनफैक्ट दिस इज द सिंगल बिगेस्ट प्रॉब्लम। बिना सॉफ्टवेयर फॉर ऑपरेशनलाइजिंग द जीएमएस बाकी स्टेक होल्डर्स का कुछ ना कुछ काम नहीं कर सकता है। ज्वेलर्स आर रेडी, हॉलमार्क सेंटर, CPTCs आर रेडी, गोल्ड रिफाइनरीज आर रेडी, सब लोग तैयार है। कस्टमर्स आर वेटिंग विद द ज्वेलरी, लेकिन हमको ये कर नहीं सकता क्योंकि ये बैंक्स आर नॉट विलिंग टू स्टार्ट द मोबिलाइजेशन बिकॉज इनका पास ये जो सॉफ्टवेयर है वो अभी तक तैयार नहीं है। सो वी रिक्वेस्ट द RBI टू स्पीड अप बिकॉज फंड्स आर नॉट प्रॉब्लम फॉर द बैंक्स। ओनली थिंग इज दैट दिस इज ये जो गोल्ड डिपॉजिट कलेक्शन करना वो इनका कोर एरिया नहीं है। Probably they are more interested in the other type of monetary assets. But अभी गवर्नमेंट ने ये because of this commodity exchanges, gold has been converted to an asset class, EGR.
So government has already permitted the opening of gold metal accounts. So इसके लिए बैंक ने कुछ करना है, उनका पोर्टल तुरंत तैयार करना है, then only we can do the mobilization of GMS deposit. बाकी सब लोग तैयार हैं. And the scheme is very beneficial for all the stakeholders. ओके, थैंक यू. हम चाहते हैं कि ज्वेलर्स को 1.5% का कमीशन जल्दी से जल्दी जीएमएस में पार्टिसिपेट करके मिल सके, ऐसी हम आशा रखते हैं. और एक सवाल, आखिरी सवाल मैं अनिल भाई से पूछना चाहूँगा, थोड़ा आउट ऑफ है इसमें, रिफाइनरी के ऊपर में. यूएई का जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसके अंदर में जो ज्वेलरी इंडिया से इंपोर्ट करते हैं उसके ऊपर में 5% का टैक्स नहीं लगेगा. और तो अभी 50 टन एक्सपोर्ट हो रहा है, उसके बदले हो सकता है वो 4 गुना हो जावे, 200 टन एक्सपोर्ट भी हो सकता है. लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन डाली गई है कि इंडिया में जो इंपोर्ट होगा 200 टन तक गोल्ड, उसका ऊपर में 1% का डिस्काउंट दिया जाएगा. तो उससे क्या है, इंडिया की 41 रिफाइनरी जिसकी कैपेसिटी 1000 टन रिफाइन करने की है, वो क्या सब बंद हो जाएगी? उसमें आपका क्या अभिप्राय है? आवाज नहीं आ रहा है. असल में बहुत क्रूशियल सवाल है रिफाइनरी के सर्वाइवल के लिए. अभी ये 41 जो रिफाइनरी है वो तो लाइसेंस रिफाइनरी, उसके अलावा भी अगर 200 टन गोल्ड इंडिया की समझो बड़ी बड़ी सब मिला के 800 टन डिमांड है, 800 टन में से 200 टन मतलब ऑलमोस्ट कमिंग टू अबाउट 25% गोल्ड अगर 1% डिस्काउंट से आ रहा है, और इट इज बेसिकली डेजिग्नेटेड फॉर द ज्वेलरी एक्सपोर्ट ओनली. अभी एक तो मॉनिटर करना भी डिफिकल्ट रहेगा. अभी 200 टन जो गोल्ड इंपोर्ट हुआ है वही जो गोल्ड वापस मार्केट में आ जाके ज्वेलरी बन के वापस जाने वाला है. तो शायद 1% का बेनिफिट जो इम्पोर्टर है उसको मिलेगा, शायद ज्वेलरी इंडस्ट्री तक एक बेनिफिट पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा पता नहीं है. मगर रिफाइनर के लिए तो डेफिनेटली थोड़ा ये हो जाएगा कि जो रिफाइनरी डोरे इंपोर्ट करती है अभी आज की तारीख में, और उनको जो रेट ऑफ ड्यूटी में जो कंसेशन दिया गया दैट इज ओनली 0.65%. उसके सामने में खाली प्योर रिफाइंड गोल्ड इंपोर्ट होकर जो इंडिया में आएगा उसको 1% का कंसेशन दे दिया गया. तो दोनों में इम्बैलेंस हो जाता है. मेरे ख्याल से जो रिफाइनरी 41 रिफाइनरी जो इसमें से काफी रिफाइनरी सिर्फ डोरे पे सर्वाइव करती है. ये जो लाइसेंस रिफाइनरी है उन लोग को डोरे इंपोर्ट करके, क्योंकि कच्चा सोना है, शायद मार्केट में सोच को $2-3 नीचे भी मिलता है. 0.65% में ड्यूटी का बेनिफिट में सब मिला के 15-20 पॉइंट का फायदा है, ज्यादा फायदा इसमें है नहीं. तो अगर ये 1% का अगर इसका भी खर्चा है 0.65% ड्यूटी डिफरेंस इज नॉट ऑन रिफाइंड गोल्ड, इज अनरिफाइंड गोल्ड, प्रोसेस नहीं हुआ उसका खर्चा है. तो कैसे सर्वाइव करेंगे 1% कंपटीशन के सामने? सारे जो लाइसेंस रिफाइनरी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी. हो सकता है काफी रिफाइनरी आउट ऑफ मार्केट भी हो जाएगी. तो ये चीज भी हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके रखी है कि भाई या तो लेवल प्लेइंग फील्ड हमको भी मिलना चाहिए. जो रिफाइनरी इतना बड़ा खर्चा करके इतना सारा एम्प्लॉयमेंट करके, मेक इन इंडिया का कंसेप्ट में गुड डिलीवरी का भी कंसेप्ट आ गया. धीरे धीरे यहाँ के जो अपने जो एक्सचेंजेस है उसने भी इंडिया गुड डिलीवरी को पहले LBA में ये लोग एक्सेप्ट करते थे, इंटरनेशनली अप्रूव्ड हॉलमार्क को. अभी इंडिया के हॉलमार्क को भी जब अप्रूव करने रखा है, तो ये सब करने के बाद वापिस हम लोग बैक ट्रैक कर रहे हैं कि ये रिफाइनरी बंद हो जाए. तो पूरा कंसेप्ट भी फेल हो जाए, रिफाइनरी भी तकलीफ में आ जाएगी. इतने सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इतने सारे स्किल डेवलपमेंट, करोड़ों रुपया रिफाइनरी का डेवलपमेंट में लग जाता है. तो ये सब चीज को वापिस वही जगह पे रिवर्स पोजीशन में लाके रखे. तो हम लोग ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके भी हमको लेवल प्लेइंग हो, या तो हमको सिमिलर टाइप का डिस्काउंट रिफाइनरी को मतलब कंसेशन रेट मिल जाए, या तो फिर ये जो मॉनिटर जो 1% का लेस करके जो गोल्ड 150 टन आएगा उसको मॉनिटर कैसे करेंगे? वही गोल्ड में से ज्वेलरी हो जाए, नहीं तो मार्केट में ऐसे भी आएगी तो शायद मार्केट भी इम्बैलेंस हो जाएगा. कोई गोल्ड का रेट कोई और बोलेगा, जिसके पास कंसेशन रेट का गोल्ड है कोई और में बेचेगा. तो मेरे ख्याल से काफी दिक्कतें आने वाली है. तो इसके पर भी सॉरी अनिल भाई, टाइम की कमी की वजह से नहीं. ठीक है. थैंक यू सर. थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन आपका सुझाव है कि इसमें 1% का डिस्काउंट रिफाइनरी को भी मिलना चाहिए. जितना दुबई से इंपोर्ट करने पे मिलेगा वो इंडियन रिफाइनरी को मिलना चाहिए. लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए सर. ओके, थैंक यू. मैं सबका खूब आभारी हूँ. ICC तरफ से आपका सब आभारी हूँ. थैंक यू सो मच. Thank you so much, all the panelists, for being in the session and addressing the audience. Mr. Ajmera, I would request you on behalf of ICC to please give away mementos to Mr. Uday Shinde, President, Indian Association for Hallmarking Center,
Mr. Kanchan Jana. May I also take this opportunity to heartily thank our virtual speakers, Mr. Anil Kansara, Technical Advisor, Yash Oro India Private Limited, Mr. James Joes, Managing Director, CGR Metal Alloys and Past Secretary, AGRM, and Mr. Pavan Kumar Kandoi, Deputy Director General, Eastern Regional Office, BIS. Thank you so much. I think a group photo is, you have to pose for it all together. May I also take the opportunity to thank all the sponsors. Without you, the show wouldn't have gone on and been a success today. Thank you so much, sponsors. Our associate sponsors are Platinum Guild India, JGPC, De Beers, Forevermark, Fisher, Nemichand Bamalwa, Mahavir Danwar, Daya Gold, Manik Chand, GJC. We have lunch sponsors as Kartik A. Bullion, logistics sponsor as BVC, and exchange sponsor as National Stock Exchange. Our association partners are Akhil Bharatiya Swarnaka Sangha, Howrah Jewellery Traders Association, Bangya Swarna Shilpa Samiti, Swarna Shilpa Shamiti Bachao Committee, Swarnalankar Babshai Kalyan Shamiti. Thank you so much. Please proceed towards lunch. Thank you for coming and attending the show. Thanks.